Professor Mukesh Sharma sir and Shivraj sir to welcome our chief guest, Professor Anil Kumar Vasist. He is from Kurukshetra University, Haryana. I request Professor Anil from Physics Department to present a shawl to our chief guest. And welcome him. Give a big round of applause. I request Professor Shivraj sir and Professor Jaimala madam to present a sapling to our keynote speaker, Professor Kapil Kumar Sharma sir, and also present him a shawl. I request Professor Mukesh Sharma sir, Professor Mridul sir, and Dr. Sandeep to welcome our guest of honor by presenting a sapling and a shawl. Professor S.C. Agrawal sir, our guest of honor, one of the senior member of the family of the Department of Mathematics. I request Professor Anil and Professor Shivraj to present a sapling to our Pro Vice Chancellor Sir, Professor Mridul Kumar Gupta. I request Professor Anil and Dr. Sandeep Kumar to welcome Director Research and Academic Professor Birpal Sir by presenting him a sapling. Now I request Dr. Sandeep to welcome Professor Shivraj Sir by presenting him a sapling. Chairperson of this event and this national conference. Next, I would like to request Dean Faculty of Science, Professor Jaimala Madam, for her welcome address. Give a big round of applause for presenting Professor Jaimala Madam with a sapling. Actually, every one of us is very eager to listen to our Honorable Vice Chancellor Madam. Good morning. A very warm welcome on behalf of Chaudhry Charan Singh University to the entire dais. ऐसे ही बोल सकते हैं अभी quickly. And esteemed faculty members, young friends, dear students. I mean, it's indeed a pleasure for me to come to this department because science has always been my passion. And कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पूरे इंटायर टीम को बधाई दूंगी कि एक अच्छा सेमिनार ये लोग कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, रिसर्च स्कॉलर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए.
आप लोग ये जितने डायस पे लोग बैठे हैं ना, इनसे इतने क्वेश्चंस पूछना कि आप लोग को ये समझ आए कि हाँ ठीक है, हमारा माइंड ब्लोइंग सेशन कैसे होता है। ऐसे ही होना चाहिए बच्चों को, ठीक है? मृदुल जी ने मुझे बताया कि ये जो सामने रखे हैं ये 76 से रखे हैं। तो मैंने उनसे पूछा प्रिजर्वेशन तो बहुत अच्छा है, नया क्या बना 76 के बाद, है ना? तो कुछ नए कबर्ड्स का होना चाहिए, बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें ये सब और जगह आप लोग रख सकें, है ना? स्टूडेंट डिमांड भी ऐसी होनी चाहिए अपने हेड से। मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं ये भी करो, वो भी करो, ऐसा करो, है ना? That is why we are here with good rankings, we are here with good research. This department is doing very good in research. तो आप लोगों को इनसे बहुत सीखना है ना? आप लोग भी एक पिलर बन के खड़े हों, और मैं हमेशा बोलती हूँ जो मेरे सामने ये बच्चे बैठे हैं, वो हमेशा अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स के साथ बहुत फ्रेंडली डिस्कशंस करें, बहुत सारी चीजें उनसे पूछते रहें, गाइडेंस लेते रहें, जिससे हम लोग की तरह प्रोफेसर्स एंड वाइस चांसलर्स बने, है ना? थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर एंड आई वुड लाइक टू लीव। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am, for your encouragement and inspiration. It is my pleasure to invite the Dean Faculty of Science, Professor Jaimala, to deliver the welcome address with her insightful words. Thank you, Dr. Saru. There is a saying of Roger Penrose who says, there is a very deep connection between mathematics and the way the universe works. Good morning, esteemed guests, distinguished delegates, respected faculty members, colleagues, researchers, and dear students. Being the Dean Faculty of Science on behalf of all the science departments of the university, and being the member of this department on behalf of the Department of Mathematics specifically, it is my privilege to extend a warm welcome to all of you in this 2 days national conference. Whatever words I mentioned in the beginning of my words are very well reflecting the image of this conference, very well reflecting the title of the conference, which is Computational and Theoretical Advances in Mathematical Sciences and Their Applications. Here, during the felicitation, you have been introduced with our guest of honor, Professor S.C. Agarwal, a renowned mathematician, under whose guidance more than 40 students completed their research, and under whose guidance we, including myself, we could be able to publish our research papers. He is 82 years old, and in spite of this age, even today, he is always eager to take your classes. Always eager to take your classes. He is always ready to guide us for research. So this is one of the guests which we have invited for this conference. You have been introduced with our chief guest, Professor A.K. Vashisht, and another name, a big name in the field of applied mathematics. He was, because now he is retired, though he is serving in the Department of Mathematics, Kurukshetra University, he is as well as administrator in Kurukshetra University. You can told me that I always like the problems which come across students. He has been retired from the Department of Mathematics, but you would agree with me that he is still very young, charming, and energetic, which you would always feel whenever you will meet him. You have been introduced with our keynote speaker, Professor Kapil Kumar Sharma, who is a professor as well as a proctor
in South Asian University, New Delhi, who did his PhD from IIT Kanpur, who had been awarded the prestigious IA postdoctoral fellowship and joined MAB Institute, the Mathematic, Bordeaux University. You will also get opportunity to meet many other researchers, industrialists, and academicians during this conference. So, with all this, you can very well conclude that how this conference, which is enriched by such a diverse and accomplished gathering of mathematicians, scientists, and researchers, will contribute in shaping the future of science, technology, and society. You know that behind such type of events is always the head of the institution. So first of all, I formally like to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Sangeeta Shukla, who always inspire us, who always cooperate each and every events, and he was here few moments ago. I am also delighted honor Professor S.C. Agrawal, Chief Guest Professor A.K. Vashisht, and keynote speaker Professor Kapil Kumar Sharma, and all other dignitaries who will join us during this conference. I also welcome Professor Mridul Kumar Gupta, who is not only the member of this department, but the senior most faculty of the university, and recently have been given the charge of Pro Vice Chancellor of this university, which is a matter of pride for all of us. We welcome you, sir. I also welcome Director Academics, Professor Sanjeev Kumar Sharma in his absentia, Director Research and Development, Professor Veerpal Singh. You can see he's a very young guy, sit on the extreme left. And now he is holding the position of Director Research and Development. This is not a small responsibility. This is a very big responsibility. And I would like to say, my students, that we would like to see you on the dais like these peoples. I also welcome my colleagues, Professor Anil Malik from Department of Physics, other colleagues of this department, of the university, of other departments of the university, and the constituent colleges who have joined us in this conference. I also extend my gratitude to the media, who I'm sure will give full and fruitful coverage of this conference and will make society aware of some facts that mathematics is not just a tool for calculation, but it is a way of thinking, a framework for understanding the patterns and structures that govern our universe. That mathematics has undergone a profound transformation, which are not just shaping academia, realizing industries, healthcare, finance, and even our daily lives. That mathematics has become the backbone of innovation. That algorithm based on graph theory is empowering our GPS system, that Fourier transforms are used in medical imaging to save lives, and there are many more concepts of mathematics which have been used, and the researchers are using them to bring the drastic changes in our day to day life. Even as a student of mathematics, you should know that what are the mathematical concepts which are being used behind Google, behind GPS system, and behind many more latest technologies which we are using these days. So, dear students, as you will be engaged in discussions and presentations over the next 2 days, I encourage you to think beyond the equations, beyond the calculations which you do in mathematics, and explore the limitless possibilities that mathematics offers. Once again, I extend my heartfelt gratitude to all of you and wish you all a fruitful and enriching conference. Thank you. I would end my words with the words of Stefan Walfom, who says mathematics is the abstract key
which turns the lock of the physical universe. Thank you. Thank you very much, madam, for the wonderful welcome address and for greeting the gathering on this event. We are feeling inspired and motivated. Now it is my pleasure to invite the convener of the workshop, Professor Mukesh Kumar Sharma, sir, Head Department of Mathematics, to present an overview of this conference. Thank you, Dr. Saru. Honorable Vice Chancellor, Professor Sangeeta Suklaji, the Chief Guest of the inaugural session, Professor A.K. Vasishtji, Senior Professor of Kurukshetra University, Kurukshetra. Guest of honor of today's inaugural session, Professor S. Agrawal, sir. Keynote speaker of the conference, Professor Kapil Kumar Sharma ji from South Asian University. And Director Research and Development, Professor Veerpal ji, Dean Science, and my senior colleague, Professor Anil Malik ji, Professor Shivraj ji, Organizing Secretary of the conference, as team guest, speakers, and participants. A very good morning to one and all present here. I am honored to welcome you to this national conference on computational and theoretical advances in mathematical sciences and their applications. Firstly, I would like to express my gratitude to each and every one of you for joining us today, and your presence is a testament to the growing importance of these innovations field in shaping the future. As the convener of this national conference, I am delighted to bring together the renowned mathematicians and researchers and practitioners from around the globe to share their insight and advancement in these rapidly evolving fields. I am honored to address this gathering of distinguished scholars, researchers, and experts in the field of mathematical sciences. The National Conference on Computational and Theoretical Advances in Mathematical Sciences and Their Applications is a significant event that bring together the best minds in the field to share their knowledge, ideas, and expertise. The conference is a testament to the importance of mathematical sciences in addressing the complex challenges facing our society, and the applications of mathematical sciences are very vast and diverse, ranging from the science, technology, engineering, and mathematics fields to the social sciences, economics, and finance. This conference provides a platform for researchers to present their latest findings, share their expertise, and collaborate with peers. The conference proceeding of the conference proceeding will feature a wide range of topics. This conference also aims to showcase cutting-edge in research innovations, foster collaborations, and knowledge sharing. Our program features an impressive lineup of keynote discussions and in this stations from the different parts of the country. And in this conference, we have participants almost from all the stakeholders of academy, fraternity. We have received 50 research papers, and there will be 10 sessions during these 2 days of invitee talks and paper presentations. Let us embark on this exciting journey, exploring the frontiers of computational and theoretical mathematics, their advancements, and their applications. Together, we can shape the future of these technologies and create a better world for all. Thank you once again, and let the conference begins. Thank you all. Thanks very much, sir, for providing a comprehensive understanding of the objectives and significance of this conference. And now we come to a very special part of this program. I request all the dignitaries on the dais to release the souvenir of the conference.
Now, on this event, I am extremely happy to invite the Director Research and Development, Professor Birpal Singh, to address the gathering with his expertise. Thank you, Professor Saru Kumari. Good morning to one and all present in this important conference organized by Department of Mathematics of this university and IFPM, Muradabad. First of all, let me congratulate the entire Department of Mathematics, especially the head Department of Mathematics, Professor Mukesh Kumar Sharma, to have that kind of initiative. Continuously, he's doing that kind of activity in the university. On the dais, the chief guest of this conference, Professor A.K. Vasist, the guest of honor, our department, Professor S.C. Agarwal. I was also seeing the activities or the academic activities, especially of Professor S.C. Agarwal, when I was the student of this department. I was the student of Department of Physics, and the building of Department of Physics was the ground floor of this building. I know well about our guest of honor, Professor S.C. Agarwal. Professor Kapil Kumar Sharma, the keynote address in which in this conference we have the keynote address of Professor Kapil Kumar Sharma. Professor Mridul Kumar Gupta, the Pro Vice Chancellor of the university. Professor Jaimala, the Dean Faculty of Science. Professor Sivraj Undir, the well-known professor of this department. And dear participants, first of all, let me thank the Department of Mathematics for inviting me and having me this chance to say something merit. Although Professor Jaimala and Professor Mukesh have told about the seminar, about the conference, about the theme, and she has already told about the speakers. So it's my moral responsibility to say something about my university, our university, the Chaudhary Charan Singh University Meerut, in front of this August gathering. We all know that this particular university is the well-known university of Western Uttar Pradesh, and we are in NCR region. So from that point of view, we are active, I can say. And as you will see the credentials or the recent academic achievements or research achievements of this university, then I'm sure you will surprise to know that what we are doing. As we all know that this particular university in NEC, we are A++. You all are the student of mathematics. And simply saying that we are A++ maybe doesn't make any sense for a mathematician. Until or unless we don't know that how much CGPA, how much marks, how much numbers we are getting in that. So it's a matter of proud for me to disclose that we are having 3.66 out of 4 CGPA in NEC. It's a matter of proud for me, just to let you know. In addition to that, Chaudhary Charan Singh University, uh, first time in the history of this university, we are also having some position, not very good position, in NIRF also. In NIRF 2024, this university ranked among top 100 university under state-funded government university category. It's not up like that. Again, we have to check that how many universities are
under state funded government university in country. So you will see there are more than 600 or 700 university comes under that category. So in this again we are having good position, and in addition to that, in overall category, our university is among top 200 university under university category rank with a rank band 151 to 200. It's again a matter of proud for me. In addition to that, we have received a grant of rupees 100 crore from government of India just because of NACI plus plus and just because of NIRF ranking. We are also among top state university of the country that received Research Excellence Citation Award. I used to discuss or to disclose that award whenever I got that chance. And this particular award is really very important for science fraternity because this particular award is given by Clarivate and Web of Science. We all know about the publishers. And it's a matter of proud for me just to say that this particular university, the Chaudhary Charan Singh University, is at the top in the country and received Research Excellence Citation Award in state university category again. In addition to that, it's again a matter of proud for me, although it's a matter that today we have Saru Kumari with us. In her absence also, I used to mention that again just because of her research contribution. I'm not saying her because ठीक है वहाँ research excellence award in a category, there is a category women in research. Again, Clarivate and Web of Science really awarded Dr. Saru Kumari as a topmost scientist of the country, not among the state university, not among the state university. In the country, she is at the top and received Women in Research category award by Clarivate and Web of Science under Research Excellence Citation Award 2023. It's a matter of proud for us. Again, uh, either I speak something about Professor Saru Kumari. It's not only Saru Kumari. Recently, we have received CIMAGO institutional ranking. In 2024, we were at 35th position in the country in CIMAGO institutional ranking. CIMAGO institutional ranking is again a very important ranking, and that is again related to research. Now, in this year, in 2024, we are having 29th position in the country in this category, and we become first in Uttar Pradesh in this category. And again, in this, if you see the data subject wise, then computer science. Our computer science rank is really, really very excellent, and that is more, I think, under 30 we are in the country. And when that kind of data has been published in newspapers, then our computer science people really become very happy. They are running computer science department in engineering. Then I told that this particular kind of ranking is not only just because of you. The major contribution of in this ranking is just because of the professors of mathematics, because they all more or less all are working in the field of computer science. Either Professor Sivraj Pundir or Professor Mukesh Kumar Sharma or Professor Jayamala or Saru Kumari or Professor Madhul Kumar Gupta or Professor Sandeep, all are doing well not only in traditional mathematics, they are also doing well in computer science because things are related, things are interdisciplinary. So it's again a matter of proud for us that we are having that kind of good ranking. In addition to that, in India Today ranking, our university ranked at a 21st rank in India, in India Today MDRA ranking. And again, in case of IPR generation, it's again a matter of proud for me just to share with you people that our university in 2023, we were at fourth rank in India among government university in patent granted. And if you see again the data, I found that at fourth position there was four university. GNU was Vijas. University of Hyderabad at again at what fourth position. University of Hyderabad was at again fourth position, and the Chaudhary Charan Singh University was at again the fourth position. So that was again a very good kind of achievement for this university. In addition to that,
In QS ranking, QS World University ranking, we are performing well. And in Southern Asia, we are at 222 rank in Southern Asia. And we are in a rank band of 701 to 750 in total Asia. And in addition to that, we are also having a good rank in Memometrics 2024 ranking. And our university rank, the country rank of our university is 139, and we were at first in the state. And the H index, because we all are the science students, and we try to publish our research in that kind of journals. So we are having a very good H index of last 5 year, and that is 43. That comes under excellent category. In addition to that, our field weighted citation impact is 1.24, whereas the average field weighted citation impact is 1 across the globe. So we are doing well in that direction also. Our citation per publication is 12.2, which again very impressive. And our highest impact factor of publication is really very impressive, and that is 31.6. In addition to mathematics, this particular high impact factor is from my department. Professor Sanjeev Kumar Sharma is doing well, and the highest impact factor publication is just due to by the Professor Sanjeev Kumar Sharma contribution, and that is 31.6. And it's again a matter of proud for me to say that most of the publications published by this university are in Q1 rating journals. There is a data that we are publishing more than 37.3 publications in Q1 rating journals. So these are our credentials in terms of teaching and research. So with these words, I congratulate the entire department, entire department of mathematics, and entire university to organize that kind of activity, and especially the department of mathematics who invite me and invite me to say something about the university. Thank you very much. Thanks very much, sir, for your valuable perspectives in the context of this conference and sharing almost all the achievements of our university, and that too with the authentic data, and instilling a sense of pride among us, also acquainting the outskirt participants with the achievement fact file of our university. Thank you so much, sir. Next, I would be very happy and feeling very delighted to invite the guest of honor, Professor S.C. Agarwal, sir, to enrich the gathering with his views and experiences. Good morning, everybody, and thank you very much for very kind words of Professor Jaimala, except one complaint. Professor Vasisht, my long-time friend from Kurukshetra University, when she was talking about Professor Vasisht, she had a number of adjectives: charming, handsome, energetic, and whatnot. When she talked about me, you know what she said: aged. Anyway, Honorable Vice Chancellor, Professor Sangeeta Shukla, she left in fact because of some other engagements. Pro Vice Chancellor, Professor Mridul Kumar Gupta, Chief Guest, Professor Anil Kumar Vasisht, Keynote Speaker, Professor Kapil Kumar Sharma, Academic Director, Professor Sanjeev Kumar Sharma, Research Director, Professor Veerpal Singh, Dean of Science Faculty, Professor Jaimala, Chairman of the conference, Professor Shivraj Pundir, Convener, Professor Mukesh Kumar Sharma, and organizing secretaries, Dr. Saru Kumari and Dr. Sandeep Kumar.
It's my pleasure and privilege both to be present in this inaugural program of the conference. Many of you might not be knowing, so I would like to share. My association with the department has been very long, since 1969, when, after completing my PhD from IIT Kanpur, I joined this newly created department. In fact, I was first to join the department as lecturer, and professor and readers came after me. I have worked here for 36 years. I hope you can appreciate my deep attachment with the department and the university. And whenever I learn, as Professor Veerpal has counted a number of achievements of the department and the university, whenever I learn that the faculty members motion and working as a united force, that's very important. All the faculty members are working as one unit, have put the department and the university on the world map a number of times in research, I feel proud because I feel it is my department also, and great satisfaction. There is another reason. All the faculty members in this department are the products of this department, and most of them, of course, exceptions are everywhere. In mathematics, there are many exceptions, and even if there is exception, you say almost. Almost word is very useful for us. Except Sandeep, rest of the five have been my students. But I'm happy, Sandeep, you came after 2 years of my retirement, because now you have been the student of my students. So raising my cadre, not to father but to grandfather, by keeping me busy in one way or the other. They they have given a feeling that I am neither retired nor tired. And I think, of course, they are all my students. So, but still I thank them that they keep me busy many times. And I am so happy about it. Coming to the theme of the conference, let me first of all state that mathematics nowadays is not just about numbers, equations, or algorithms. It is now more about understanding the patterns of the universe. And it is deeply embedded in nature, science, and technology. It is a tool for discovering and describing the fundamental structures and the laws that govern our world. For example, chaos theory, particularly the butterfly effect, explains how small changes in initial conditions can lead to vastly different weather patterns. Weather forecasting uses mathematical models based on differential equations to predict storm, heat wave, and rainfall. Graph theory and probability is used to design road networks and traffic light systems that reduce congestion. Google Maps, Google Maps and GPS navigation. I hope you are familiar with GPS system, because whenever you travel by car, you ask for location and GPS will take you to that location. Google Maps and GPS navigation calculate the fastest route by solving complex shortest path problems in real time. Probability, statistics, and differential equations are used to model
stock market trends, economic policies, and financial risks. Artificial intelligence driven trading algorithms are mathematical models to predict stock price movements and execute trades within milliseconds. Orbital mechanics, based on Newton's laws of motion and calculus, helps scientists in calculating spacecraft trajectories. NASA's Mars rover landings depend upon solving complex differential equations to ensure precise entry, descent, and landing. Fourier transform and linear algebra are used in medical imaging techniques like MRI, CT scan, and ultrasound to recognize and reconstruct internal body images from raw data. The brain involves complex mathematical algorithms to create detailed 3D images, helping doctors in diagnosing diseases. In short, whether in growing plants, predicting weather, designing cities, treating diseases, managing finances, composing music, this is very important, or in exploring space, mathematics reveals hidden patterns and shape our universe. Starting from Euclid and Aryabhatta, through the golden age of mathematics, which was the golden age, 18th and 19th century, called the golden age. So, starting from Euclid and Aryabhatta, through the golden age of mathematics, where we witnessed the rise of Gauss and Euler, to 20th century, where mathematics took a giant leap forward when Alan Turing, you must have heard the name, the father of computer science, used mathematical logic to design first theoretical computers, laying foundation of modern computing. The journey how mathematics has evolved has been very exciting and really very interesting. At least you must be having a feeling that mathematics is everywhere. No branch of science can flourish without mathematics. Today, mathematics powers artificial intelligence and machine learning. It enables artificial intelligence to recognize faces, translate languages, and even drive cars. We are having driverless cars in India also, but I don't think they are successful on any route. But in USA, I have traveled in a driverless car from Los Angeles to San Diego. Most of the journey was without driver. I was sitting on the side and it was very successful. We are entering the era of quantum computing where mathematics is pushing the boundaries of what is possible. Mathematicians and physicists working together to develop algorithms of quantum computers which could revolutionize fields like cryptography, drug discovery, and climate modeling. I see that Virpal is, of course, looking after the research of whole university, but he must be having more soft corner first towards physics and then towards mathematics. You see, the topic of today's conference is designed very beautifully. It's very wide. Theoretical and computational advances in mathematical
uh, fields. So it combines two: theoretical advances and computational advances. And it is not the end here: mathematical sciences and applications. So again, you have two more options: theoretical advances in applications, computational advances in applications. So, in my opinion, it has combined four, giving lots of liberty to the speakers to speak about. Anyway, I just take very short time in explaining little about in these four areas. Mukesh, I can take some time. Theoretical advances in mathematical sciences are numerous. To mention a few: RSA algorithm used in secure banking and digital in pure mathematics. Topological data analysis helps in understanding complex structures like cancer cell mutation. Mathematical models are revolutionizing the areas like climate science, brainwave modeling in neuroscience, and supercomputers and nanotechnology in material science. So far as computational advances in mathematical sciences are concerned, I have little bit talked about it. However, it is worth mentioning that the computational simulations in finance and logistics are doing wonders, and mathematical optimization saves billions in industries like aviation and supply chain management. The interdisciplinaries are numerous, and it has penetrated in each and every discipline of knowledge. To mention in brief, mathematics is doing wonders in genome sequencing, population dynamics, and epidemiological modeling in biology, string theory, black hole theory, and quantum field theories in physics, predictive analytics in sociology, psychology, and political science and social sciences. So no science is untouched by mathematics. With so much growth and breakthrough in mathematical sciences are associated risks, dangers, and misuses. You, the young researchers, have to be very careful about it. It is therefore worthwhile to say few words about future trends and some pertinent questions for young researchers. Number one, will artificial intelligence replace human mathematicians? Your future. Or enhance their capabilities? What will be the role of mathematicians in cybersecurity, privacy, and ethics in artificial intelligence? I suggest that if not at the UGC level, but at the departmental level, there has to be a course on ethics for every research scholar to understand and read, and then to work accordingly. And number three, how mathematics will shape space exploration, energy, and medicine. These are some of the questions. Uh, Try to think about it. I conclude with the remark that theoretical mathematics provides foundation, while the computational mathematics expands its applicability. The synergy between the two, computational advancement and the mathematical theory, is leading to groundbreaking innovations. I end with the inspiring remark of Galileo, who says, mathematics is the language with which God wrote the universe, and encouraging my young researchers to explore mathematics not just as a subject, but as a powerful tool to shape the future.
And in doing so, remember one thing, that creativity and intuition are as important as rigor in mathematics. You know Ramanujan, he was not very educated. And at a very younger age, he started thinking of numbers, equations, geometry, and whatnot. And most of his results are still in the diary unproved. How he wrote? Because intuition. I thank the organizers for inviting me to this conference and giving so much honor. I hope this tradition of inviting the retired persons from the department will continue. And in each and every conference, I offer myself to remain present in each and every conference, and I'm sure the other retired persons will also join. Thank you very much. I'm so happy to be with you this morning. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your insightful address. Whenever Professor S.C. Agarwal visits the department, I always recall how he used to teach us in classes. And I would like to share one aspect of his personality today. That there could be situations when the teacher can be angry and students will be around some situations. So in those situations or in any of the situations, I never noticed Professor S.C. Agrawal in anger. Even if there is a situation of anger, and in the same situation, any common person would throw fire through his speech on the listeners or on the culprits. But in the same situation, Professor S.C. Agrawal's speech, his speech used to shower flowers on us. It was such a delightful personality I ever came across in my life. I still recall I learned a lot at that time also, and still whenever I feel anger on some situation, I teach myself that behave like Professor S.C. Agrawal, sir. It's wonderful aspect of his personality. Sure, sir. But one thing I can tell, I feel proud in telling everywhere, everybody, that the first appointment of Sadhu was done by me in Public Service Commission as a lecturer. I am thankful and will always be thankful for that, for giving me a break in government sector. We are very fortunate to have among us our chief guest, Dr. Anil Kumar Vashist. He is a professor, senior professor in the Department of Mathematics at Kurukshetra University, Haryana. With over 34 years of teaching and research experience, he has held prestigious positions such as chairman of the department, dean faculty of sciences, and NAC coordinator. As a prolific researcher, he has published over 115 papers in SCIE journals, authored 8 books, and delivered more than 109 invited talks. His research focuses on applied mathematics, including poromechanics, seismology, and wave propagation. Actively engaged in academic leadership, he has contributed to curriculum development, served on governing bodies, and received multiple awards, including the State Youth Red Cross Award of Excellence. Now it's my pride privilege to invite and request him to address with his knowledge. Thank you. Respected Professor M.K. Gupta, Pro Vice Chancellor, CCS University Meerut, Shraddheya
Professor S.C. Agrawal ji, Professor Birpal Singh, who has left. I will save the time in naming only those who are present. Professor Jaymala, Dean Faculty of Sciences. Professor Kapil Sharma from South Asian University. Professor Sivraj Singh, Chairman of this conference and former HOD. Professor M.K. Sharma, Head of the Department and Convener of this conference. Dr. Sandeep Kumar and Dr. Saru Kumari, organizing secretaries of the conferences, and all the faculty members, uh, researchers of this department, and dear fellow participants from this university, neighboring colleges, or from different states. Uh, it's a honor as well as privilege to stand before this illustrious dais in the gathering in front today to share my thoughts on a field in the subject whose foundation means the mathematical sciences. This lies very much from the society, from the God. I will start with the quote where Honorable respected Professor S.C. Agrawal ends. Mathematics has been its core because he quoted the Galileo Galilei quotes that this is the language in which the universe has been created. Why do we say so? Reason. Because mathematics, as teachers and students, they always prefer to analyze. What could have been the reason when Galileo was writing this quote? Language of God's written, the creature, the nature. I think might be two, three reasons. One is that nature is beautiful. Initially, when nature was created by the Lord or God or whatever the Shiva we say, different peoples believe it in different way. Then it was beautiful, then it was systematic, then it was orderly, then it was symmetric. And what is the language in the world which takes care of these things? That is the language of the mathematics, the language of the patterns, the language of numbers, language of geometry. So probably that could be the one of the reasons Galileo might have think for this quotation. Secondly, the order, no partiality, all fair game, all discrete, all systematic, no malice to anyone. This is possible in the language of the mathematics because they speak plain facts. No mathematicians fight with each other, either prove the theorem or give a counter example. Fight is over. Either I will convince you by giving the proof, or you will disapprove me by giving a counter example. Thing finished. We don't fight like the political science history peoples. This should be taught, this should not be taught. No, no, no. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. हम ऐसा नहीं कर सकते. होता है, नहीं होता. So probably this could be the reason. Due to its importance, we proudly belong to the country where the initial prominent, dominant contributions in mathematics came from, both in pure and applied mathematics. Though in journal meetings I hesitate to name these two areas as pure and applied, I prefer to call it as abstract and applied, not exactly purely.
Because when we are start teaching our ancestral ancient mathematics, and the first name came to our mind is the Aryabhatta. He was the astronomer first, then a mathematician. His mathematics was applied. First was the applications came to the mind, then the sutras came. So from the very beginning, take the example of the Brahmir, take the example of the Brahmagupta, take the example of the Madhvacharya or Bhaskaracharya. So these boundaries are man-made, made by us. The list of the mathematicians from the ancient to the moderns, be it Manjul Bhargav, be it Andrew Wiles, be it Ramanujan or Mariam Mir Khajani, Akshay Venkatesh, and a recent field medalist Mariana Vijayovska. The list is long. So many persons has contributed in the field of the mathematics, in the humanities journey, providing the tools to understand our universe. The aim is that we should give a core mathematics so that we can understand universe, we can build our technology, we can serve to the society, we can enrich our lives. That is the ultimate game, and that is ultimate goal. This we have fortunate enough to have the next generation teacher, our teacher prior to our generation, Professor S.C. Agarwal. And those generation teachers, they were very sincere. And this sincerity sometimes helpful and sometimes put you in quandra. Because this generation used to do so many things for their students themselves. And he has done the same job for me today. He has spoken about all those aspects which I have written for me, so he has left nothing for me to speak on. सारा काम सर ने कर दिया पहले इनकी जनरेशन के टीचर्स जो है वो सब कुछ काम ज्यादा रेडीमेड करके देते थे एनीवे सी there are two aspects of this theme of the conference. One is the theoretical dimension, and another aspect is the computational one. What is theory? Broadly speaking, theory means at present I am not finding the applications or I am not exposed to the application. Take the example of the number theory and topology. For so many years, number theory was termed as the subject pure mathematics. Hardy says purely mathematics. Then this word came from pure mathematics. But his intention was, I'm doing the mathematics purely for abstract sense. I don't have the application in mind. But the term, somehow that term pure came from there. And who could have imagined in that era and in the era of almost 1.5 century that this number theory, these elliptic curve equations, once it was studied purely for the academic pursuit, would become the cornerstone of to secure the digital transactions in the modern world. These elliptic curves theory that is being used in the cryptography. Who imagined at that time? Who imagined that topology, where even geometry's concepts are not being taught in a geometrical way, that is going to be a tool in studying the dynamical system, that is going to be a tool in data analysis.
So, what is theoretical today, it has the possibility and the potential of being the applied and computational tomorrow. Another example, when prime factorization was being done manually by the pure mathematicians, see the development in the area till that point. Then suddenly a computational algorithm for prime factorizations was developed. And thereafter, you see the development of the number theory. So, what has changed? Something has assisted. What has assisted? The algorithm, the computational algorithm. And see the development of the subject thereafter. It is in debate, not only in the mathematics platform today, I think in every job sphere, debates are going on the TVs and the newspapers that what how the AI will affect the market. Will we be relevant tomorrow after AI's implementation? Will we get the jobs? Will the number of the jobs will be as much as they are present? Most of us aspire to be the teachers or the researchers community. This questions is very much relevant to us. But when you ponder over it, answer lies in the synchronization. हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले प्रकृति के साथ, राजा के साथ, तंत्र के साथ, और वो तंत्र कैसा भी है, उसके साथ तारमता, तालमेल बिठाने की शिक्षा हमें दी जाती थी. If we stick to our roots, that knowledge system which our gurus has provided us in the past, and we keep the basics to us, we will overcome by this threat. So, key lies. Key is adapt AI. That time has gone when I have 170 theorems results in my mind. So I have the more capability of proving the theorem by drawing the different trees faster than anyone else. So I am recognized as a good mathematician. That time has gone. Because there is हम सबका बाप है, AI बैठा है. आपको 100 पता होंगे, उसे 10,000 पता है. He's creating the path. Proof generative algorithms, they have been developed. कुछ तो फ्री सॉफ्टवेयर पे है, कुछ पेड भी है. तो अगर हमारा काम वहीं तक रहेगा तो फिर हमारे लिए थ्रेट है एआई. लेकिन अगर उसी को यूज करके आप उससे आगे रहते हो तो वो थ्रेट नहीं है, तो आपके लिए टूल है. सो इट डिपेंड्स ऑन अस whether we use the technology as a tool or treat it as a threat. We want to remain in isolation or we want to progress with the advantages and adaptability of the technology and the advancements, not only in the mathematics area but in the different areas. Those who will adapt it, those who will be moving side by side of these tools, they will flourish, they will progress. We have seen from the 1980s when the computer was getting popular, same kind of the debate was going at that time also.
our jobs will be lost. How this job will be done by the computer? Computer has shown that I can do, because there were two sections. One section who was writing the algorithm for the computer, getting money for it. Those were a class of mathematicians who were contributing to the computer science, be it theoretical, be it graph theory, be it neural network, be it coding. They were contributing, they were getting money, they were getting jobs. Another, the orthodox, they just simply registered, no, 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 why should this be arranged? Everything should be on the pen and paper. We know what happened. Same will happen, friends. Same will happen with the AI and the machine learning. We have made an algorithm. We have told the computer that how did we learn for so many years as a human. Our memory was finite. This memory is effectively infinite. Our memory was based on my thinking, my thoughts only, or by the discussion with the 2, 3 fellows. Now billions people do the work online, and any word you write on the online platform, just even beat the Grammarly or any AI tool. It has gone to the AI world. It is the public property. Feel it. It is not yours. उसने anything which has just gone on the net, that is the AI property, AI learning. वो आप तो भी कर ही रहे हैं, उसने तो उससे सीख लिया. So, what is the lesson for us? The lesson is that we have to learn the areas where we can excel. We have to learn first the mathematics so that we learn the natural language processing, NPL, the language in which the AI learn, or we can make the AI tools to learn. This is the language on which all these, be it Gemini, be it ChatGPT, be it this Microsoft Copilot, or etc., so many. They are not working in the particular language of the C or the Python or like the HTML. Days are gone. छोड़ो, जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें आप बात करिए, जो लोग नेट पे डाल रहे हैं उससे बात करें. We have to make the coordination of our optimization techniques with this one. तो अगर हमें इस थ्रेड के साथ अपने आप को प्रोग्रेस कराना है, इसको एज ए टूल यूज करके इसमें से कुछ कमाना भी है, इसमें से कुछ डिविडेंड भी लेना है, तो 3 टूल्स, 3 सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो आपके पास है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप जान रहे हैं, स्टोकेस्टिक मॉडलिंग आप जान रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप जान रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा आप जान रहे हैं, इसके साथ एनपीएल पढ़िए, एंड देन जंप इनटू द फील्ड ऑफ द एआई एंड द मशीन लर्निंग. Area is new, opportunities are infinite. Like this one, very day you read it, that these kind of the computers which we work on today, they will be obsolete in the coming decade, because today's we work in the digital computers which work on the binary systems. Binary algebra is the algebra on which the whole of the graph theory and the discrete systems they work on. And US has made almost, they are making the investment since last 15 to 20 years. And
everything is ready now, that this binary computation will be a matter of the past and quantum computations will come into the picture. It is not going to be simple step by step as it is done by today. This is based on the principle of, you can say, as the statistical mechanics changed the scenario of the physics, it added a new paradigm in the mathematical physics. The same way, quantum functions, quantum function technique, and quantum graph theory will be the three subjects which will rule the scenario of the research in coming 10 to 15 years, at least 10 to 15 years. So those who take the leap forwards as on today, वो रिसर्च फील्ड में कम से कम 10 से 15 साल आराम से राज करेंगे, आराम से सेल करेंगे. These are the opportunities for the youngers to feel it and jump into. यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हम अग्रवाल सर या उनके समकक्ष जो जनरेशन थी उससे पढ़ रहे थे, तो उस टाइम गुरु के लिए शब्द ऑफिशियल वर्ड गाइड यूज किया जाता था. Now that terminology has changed. Now that is called supervisor. Is it? I thought that is it a coincidence that this word has transformed? And if I just translate the meaning, the role of the teacher was do this. This will be your topic. This will be your book. Go take this paper. Do this calculation. Come to me. Show the result. Blah blah blah. That was the role of the guide. Now terminology is changed. It is supervisor. कर लो, दिखा दो. अब सामने वाले जो यंगर साहब है कहेंगे, अच्छा आपने तो अपने गुरुओं से इतना कर लिया और हमको कुछ भी नहीं करके देते हैं. यस, लेकिन मैं इसमें अपॉर्चुनिटी देखता हूं. अपॉर्चुनिटी क्या है? मेरे जैसे टीचर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. ओके, लर्न टू बी सुपरवाइजर देन ए गाइड. Make your belief strong that if you allow the students to think openly, widely, they will do wonder and better than us. They can explore the areas, new dimensions than us. We are tight. Of course, there are certain things which we can deal with our experiences. Don't write off your guides or supervisor just by my saying. Or if you do it, then don't blame me. But why did I mention it? But why did I mention it? That time has come when we allow our students to discover the new ventures first themselves. If they get struck down, then it's our duty to support them, to guide them, to show the right path in between so that they come out of this one. But as far as the concern is very much new areas, they are coming. We have seen the area. Most of us have done our graduate degree with the nomenclature BSc non-medical. Okay. I always felt very bad that why our degree is something negative. Why it is named as negative? Non-medical. Something is non. Means medical is prime,
then we, those who are not medical, they are non-medical. It was this way. And I will that someday will come change. Okay, that this NEP gave me the opportunity, and at that very moment I became the NEP coordinator. I changed the names that from the this to the physical sciences, life sciences. रिलीव्ड. चलो रहते रहते हम कर पाए. बता क्यों रहे हैं कहानी. Medical people who ignored the mathematics most, particularly in our country, they came to the importance of the mathematics in the COVID time. When mathematical modeling, which was just considered to be the area ME, that came to the forefront so that we can mitigate, we can plan, and we can manage that epidemic in that situation. Government came to the mathematicians, models were developed, widely recognized, good results were shown, and a signal came. See, whole of the Western world making mathematics as a compulsory subject for doing the life science, even doing the MBBS. Why the India is not doing it? Even in USA at present, be it Canada, be it UK, be it Germany, if one student has not done the mathematics at the secondary level, means at the plus two level, in equivalent to our country, he or she cannot apply for MBBS. Not even a nurse, not even a pharmacist, not even a physiotherapist, nothing. That was felt. Why it is so? Can we feel the proud in this and be satisfied? No. It means I want to convey that time has come. We have to explore our potential, our job in the new areas, the areas where it has not been applied for so many. Education, read the mechanics, computer, this fluid mechanics, you are already teaching it. Excel in the biomechanics. Lot of potential. Excel potential. So those areas, say for example of, it will be just interesting. There is a open source software that is called Deep Minds. The biologist, microbiologist, the biotechnologist, they use it. It is used for the protein folding and protein mapping. And do you know on which base this software Deep Minds works on? Its core working is purely an application of the graph theory. Not I am saying in the core only. Vast part of this is the graph theory. So why can't we understand the subjects in the detail and search the new areas? Scanning is the one. I myself have practiced in my life in the non-destructive evaluation. I had been in the ICLV France for being a part of the project when my matrix formalism was being used in finding the cracks of the this tubes. Tubes means the path between London to Paris underneath sea. I never imagined that this kind of the matrix formalism is going to be a part of the non-destructive evaluation. So believe in yourself and explore it. The things may be used in some day. So be visionary, be exploratory. The I think I have to restrict myself. Now, what does rest of the things which I want to say, I can give the reference, particularly younger, and I would like that even teachers see this lecture. You know, every year, American Mathematical Society organize one congressional lecture. One theme is given.
So in the year 2023, AMS and Institute for Pure and Applied Mathematics, they jointly organized this congress, and the theme was mathematics changes everything hyphen the importance of mathematics to US and industry perspective. Why I'm telling it here? Because the lecture was given by a non-mathematician. Lecture was given by Alan Lee. Alan Lee is a technocrat. He is a chief technology officer of the analog devices in USA. Chief technological officer of some US firm. He delivered the lecture, very beautiful lecture. We must see. It makes us to feel proud in our subject. तो जो भी मुकेश जी ने समय की वजह से मुझे काटने का जो निर्देश दिया है वो सब आप जो है वहां पर, क्योंकि ये करवटें बदल रहे हैं तो मैं इनका इशारा जो है वो समझ रहा हूं। दो तीन बातें सिर्फ देकर के ब्रीफ में, एक और डेटा, छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। These are the countries, I am naming the countries where the maximum investment in the mathematics is done in the order of the priority. Number 1, USA. Number 2, UK. Number 3, Germany, France, China, Canada, Italy, Australia, Switzerland, India, and Austria. These are the countries where the investment in mathematics in terms of the sport research projects and in terms of the this manpower means paid on the salary, etc., that is done. अब इनमें से जिन कंट्रीज का आउटपुट ज्यादा है वो 5 कंट्री हैं in terms of the research output, means in terms of the patent, in terms of the number of the publications, all Q1 in good qualities. They are USA, UK, Germany, France, China, and Italy. Canada next. India last. फिर एक डाटा है, समझिएगा बात को। फिर एक डाटा है टॉप 10 कंट्रीज which are doing best in learning mathematics. There is a scale. ये जो मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है और कई मैथमेटिक्स के टेस्ट होते हैं उनके बेसिस के ऊपर बेस्ड होता है. इट इज नॉट द ओलंपियाड इज नॉट ओनली वन, दैट इज कॉल्ड ए डीसी स्कोर, सॉरी ओसी स्कोर, आई एम सॉरी. तो टॉप 10 कंट्रीज विच आर डूइंग बेस्ट इन लर्निंग द मैथमेटिक्स, दे आर नेम्ड एज साउथ कोरिया, पहली लिस्ट में नहीं था. फिनलैंड पहली में नहीं था. स्विट्जरलैंड था. जापान नहीं था. कनाडा था. नीदरलैंड नहीं था. न्यूजीलैंड नहीं था. बेल्जियम नहीं था. ऑस्ट्रेलिया था. एंड जर्मनी था. अब देखने पे ये लगता है कि ये ना कोई शायद जगलरी हो रही है. एक तरफ हम कह रहे हैं टॉप 10 कंट्रीज विच आर लर्निंग मैथमेटिक्स, गुड. कोरिया इज एट द टॉप. Neither Korea is in the top 10 countries who are investing in mathematics. Neither Korea is in top 10 countries who are publishing good, best in mathematics. What is the reason? The reason is USA. USA is neither top at the investment. Okay, ANRF, they जैसे हमने ANRF बनाया है, उन्होंने ANF बनाया है USA के अंदर, लेकिन वो फिर भी आउटपुट में टॉप में है क्योंकि they have the policies. इन सब लोगों को तैयार होने दो, जब माल तैयार हो जाएगा तो उसको उठा करके अपने पास ले आएंगे, आउटपुट मेरी बढ़ेगी, उसकी खैर पॉलिसी है. एनीवे, बट व्हाई आई एम शेयरिंग with this August gathering today, there is a purpose. The purpose is that we are not in top 10 countries which are considered to be good in learning the mathematics. This is a belief.
This is a belief, and this belief is wrong. Even if you take the one example of the mathematical Olympiad results of the last 12 years, I had been coordinator for 20 years. Till then, very few. I'm not saying that our students does not go to the international Olympiad, but it is depends on the performance is taken, number of the students who opted mathematics at the secondary level, and those who reached in the number to the international Olympiad. That ratio is very poor, against the belief that we are excellent in mathematics. So we have to think, we have to prepare. We need not to be discouraged by this data, but I am saying that we have the potential. Our government is number 9 in investing in mathematics. So it becomes our duty, whole of the research community, to respond it in a better way. And this better way can be achieved if we fill the gaps. How the gaps can be filled? Research is just like a swimming. I share my views with my researchers in the two way. There are so many games which are related to the swimming. Core games are two. One is diving, another is swimming. Lesson for us. If I want to remain confined to my subject area only, if I have taken a choice of the algebra, I want to remain throughout the life in this, that very field theory and the module theory only, then I have to learn to make a better dive, to go into the deep and take something new so that it goes to my credit. Then principle of diving works. Me like person, so they, oh, I'm not so knowledgeable, I don't remember so many theorems, I'm not good in this one subject area, then at least I should know better swimming. I should swim around. My horizontal distance should be as wide as possible. I should sit with the political science friends. I should sit with the psychological friends. I should sit with the geology friends. I should make compulsory to have a tea at least once a day with the computer science fellows, so that I can swim. When I swim wide, I have the more exposure. When I have the more exposure, I got the potentials to apply the mathematics which I know. And very easily, I get published a paper, which is the aim of us all, to complete the thesis as soon as possible. That is the optimization which we learn all. So I think I could make you lead up to your destination so that learning is the possible. I thank the organizers for giving me this opportunity uh, to talk to you in this manner, though it is the most unpleasant part for a mathematics teacher to speak on dais rather than writing. It is the very difficult thing to read from the words, and then better if we could have been in other flow if we were writing it, right? Or through slides. So as a closing remarks, I would reiterate that the mathematical sciences, whether theoretical or computational, are the vital part of our intellectual and technological future. The research being presented at this conference will no doubt contribute to ever expanding horizons of the knowledge, and I'm confident that the collaborations and discussions that take place here will shape the next generation of mathematical breakthroughs. I look forward for stimulating discussions and groundbreaking ideas that will emerge in the coming 2 days, and the collaboration that will emerge from this gathering. We have the opportunity to not only advance mathematical sciences, but also to apply these advances in ways that will have a
lasting positive impact on the world. Thank you very much. Thank you for your patience hearing, and thank you for giving me the time. Thank you. Thank you very much, sir, for your insightful views. We are fortunate to have you here being with us. We are very thankful and gracing this occasion. Now, I would like to invite and request an eminent academician, a versatile administrator, senior professor of the Department of Mathematics, patron of this conference, our Honorable Pro Vice Chancellor, Sir, Professor M.K. Gupta, to shower his blessings on us. Good afternoon, everyone. Honorable Vice Chancellor, Professor Sangeeta Shukla, though she has left. Chief guest, my friend, we have been together at several places. Professor Anil Kumar Vasist from University of Kurukshetra. Guest of honor and my teacher, and later on my colleague, Professor S.C. Agrawal sir. Keynote speaker, and from last 20 years I have been observing his journey, Professor Kapil Kumar Sharma, who is from South Asian University, Delhi. Dean, Faculty of Science, Professor Jaimala. Chairman of the Organizing Committee, Professor Shivraj Singh. Convener of the Organizing Committee and Head of the Department, Professor Mukesh Kumar Sharma. Other members of the Organizing Committee, Professor Dr. Saru Kumari and Dr. Sandeep Kumar. Friends from IFTM University, faculty members from other universities and other departments and other colleges. Professor Rahul from this university is with us. He is from Genetics and Plant Breeding. I can see Dr. Chauhan, who is from University of Jammu, is in the audience. Dear students and participants, ladies and gentlemen, on behalf of चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मैंने चौधरी चरण सिंह से क्यों कहा, क्योंकि मेरे को ना अपना तो on behalf of चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, I extend my heartiest welcome to you all. I am really happy to witness the convergence of brilliant minds dedicated to exchange their ideas during the conference on computational and theoretical advances in mathematical sciences and their applications today and tomorrow. I am thankful to our Honorable Vice Chancellor, Professor Sangeeta Shukla, for her unwavering dedication and commitment to our university's growth. Madam, though she is not here, we are grateful to your tireless efforts in ensuring that our university continues to thrive. And I am especially thankful to Professor S.C. Agrawal sir and Professor A.K. Vasist sir for making my work, for making me my work zero. No work left. Sir, no work left. You have learned a lot from Professor Agarwal and Professor Vasist's speech. They have told you how mathematics is important, how mathematics is changing, what next you have to do. Everything they have told. Now you have to do only. You have to act only. Let us remember that sharing of knowledge
is the cornerstone of progress. And today's gathering exemplifies our collective commitment to the betterment of education, research, and the society we serve. Unless your research goes to society, I think it is not fully meaningful. Your research should go to society also. Society should be benefited by your research. I sincerely hope that the participants will get, however, they have got many ideas, they will get more deep insights, new ideas, and acquire new skills during their stay here today and tomorrow. And I hope after successful completion of the conference, they will take away many new things, many new methods, many new ideas, which will improve their education, their teaching, their research, and their commitment for the society. With these words, I once again welcome you and hope your stay will be very fruitful here and your pursuit for knowledge will somewhat will be fulfilled. Not fully, if it's not fully fulfilled, somewhat it will be fulfilled. With these words, I thank you for inviting me here. I congratulate the organizers for conducting this conference. Once again, I welcome you all. Thank you all. सभी बच्चों को मैं एक बात जरूर कहता हूं, बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस. ये बात ध्यान रखो, बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस. राइट? थैंक यू. Thank you very much, sir, for your encouraging words. Now I would like to request and invite Professor Shivraj, sir, the chairperson of this event, to pay the vote of thanks. थैंक यू डॉक्टर सरू. नमस्कार सबको, एस्टीम गेस्ट, डिग्नेटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स. वैसे मेरा काम मृदुल सर ने बहुत सारा कर ही दिया है, फिर भी थोड़ा सा कुछ लोग छूट गए, उन सबको भी मुझे धन्यवाद करना है. सबसे पहले हमारी वाइस चांसलर, हम सब जानते हैं जो इस यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि कितनी डायनेमिक है, कितनी विजनरी है और कितना कमिटमेंट है इस यूनिवर्सिटी को लेके. हमारी यूनिवर्सिटी डे बाय डे एक से एक रैंक अचीव कर रही है. यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं और हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा है. तो मैं उन्हें स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा उनके एब्सेंस में, कि उनकी वजह से ये सारी चीजें, पूरे विश्वविद्यालय का एक वातावरण बदला है और बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं यहाँ पे. मृदुल सर हमारे प्रो वाइस चांसलर हमारे बीच के हैं, लेकिन हम सब गर्व महसूस करते हैं उन्हें प्रो वाइस चांसलर देखते हुए. बहुत डायनेमिक हैं, बहुत डिसिप्लिन है और टीचर भी रहे हम सबके, उनका विशेष धन्यवाद. आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर अनिल कुमार वशिष्ठ जी, हमें लगता है नहीं कि वो कुरुक्षेत्र के हैं, हमें लगता है वो मेरठ के ही हैं. और जब भी कभी हमें जरूरत होती है किसी बोर्ड ऑफ स्टडीज में, किसी भी समय, बिना किसी हेजिटेशन के हम उन्हें कॉल करते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी उपस्थिति से हमें यहाँ पे. हमारे की नोट स्पीकर प्रोफेसर कपिल कुमार शर्मा जी, अब बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और नेक्स्ट सेशन उन्हीं का होगा, की नोट सेशन. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पे होने के लिए. बहुत विशेष है मेरे लिए प्रोफेसर एस.सी. अग्रवाल सर, हमारे सबके टीचर रहे हैं. उन्हें देख के हम लोगों ने सीखा है कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है. और सर सभी के टीचर हैं, डॉक्टर संदीप के भी टीचर हैं, हम सबके टीचर्स हैं. तो अपने एक रेस्पेक्टेड टीचर्स को बीच में होना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है. सर आप स्वस्थ रहें हमेशा और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें और आते रहें. सर बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे बीच में प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी चले गए हैं. आपने देखा कितना डायनेमिक और कितना उन्होंने रिसर्च रैंकिंग को बताया, सारी चीजों को.
सब बहुत सिस्टम से चीजों को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वीरपाल जी का। डीन साइंस प्रोफेसर जयमाला मैम, उन्होंने बहुत प्लानिंग की है, बहुत सारे साइंस के डिपार्टमेंट देखने होते हैं, और मैं देखता था कल से वो रंगोली के कलर फाइनल कर रही थी और बाकी चीजें देख रही थी। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कन्वीनर प्रोफेसर मुकेश कुमार शर्मा लगातार एक्टिविटीज करते रहते हैं, और उनका रिसर्च एरिया भी बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है। वो एकदम रॉकेट की तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं रिसर्च में। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी रिसर्च के लिए और इस कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर सरू कुमारी, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से संचालन कर रही हैं, और मैडम ने भी बताया, प्रोफेसर वीरपाल जी ने भी बताया, उनकी रैंकिंग वर्ल्ड क्लास है। वो हम सब के लिए प्राउड है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए प्राउड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरू। डॉक्टर संदीप कुमार हमारे पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन इस पूरी प्लानिंग के डे 1 से वो इन्वॉल्व हैं, और सारा काम पीछे कौन स्पीकर्स हैं, कैसे सेशंस हो गए, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत कमिटेड हैं। तो डॉक्टर संदीप कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जितने हमारे स्पीकर्स होंगे, एडवाइजरी कमेटी के जितने लोग हैं, सबको विशेष विशेष धन्यवाद। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, मैंने देखा कि पूरा एक वॉर रूम बना हुआ है उधर, उसमें जहां वो सारे रहते हैं, देर शाम तक कहीं टैग बना रहे हैं, बैग सिलेक्ट कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही इस पोजीशन में ये प्रोग्राम हो पा रहा है। तो इनके इस स्पेशल एफर्ट्स के लिए पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और पीजी स्टूडेंट, उनसे रिसर्च का एक्सपेक्टेड नहीं था। कल मैंने उन्हें रंगोली बनाते हुए देखा, कितने कमिटमेंट से काम कर रहे थे। आज सुबह सबका वेलकम कर रहे थे। तो जितने भी पीजी स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, सबका विशेष विशेष धन्यवाद। हमारा ऑफिस स्टाफ, मैं देखता था संजय भी फाइल लिए हुए अप्रूवल्स के लिए बार बार सब जगह पे जा रहे हैं, विशेष धन्यवाद। मीडिया पर्संस जो कवर कर रहे हैं, बीच में भी आए हैं हम लोगों के, और हमारा सपोर्टिव स्टाफ कंप्यूटर्स वाला जो सारा काम करता है, कब लिंक ऐड हुए कब नहीं हुए, सबका विशेष विशेष धन्यवाद। और सबके कलेक्टिव एफर्ट्स से ये सब चीजें पॉसिबल हैं। तो पुनः एक बार सबका धन्यवाद। Thank you very much, sir, for playing the role of this custom. And now I would like to request everyone to stand up for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। After 20 minutes, we will gather here again for the keynote address. And now I invite everyone to cherish the delicacies from Haiti. गेस्ट्स के जाने के बाद मुझे एक बात बोलनी है, स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे। किसी भी, जब आप गेस्ट को इनवाइट करते हो, अपने घर में भी इनवाइट करते हो, तो आपको अपना बेस्ट देना होता है उसको। उसे ऐसा लगना चाहिए आप उसे ऑनर कर रहे हैं, है या नहीं? हमने बुलाया ना इन गेस्ट्स को, कोई जबरदस्ती तो आया नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, कुछ स्टूडेंट कंटिन्यूअसली बात करते हैं, मैं अभी पॉइंट आउट नहीं करूंगी, आप लोग को बुरा लग जाएगा। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपने इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराया है, कुछ गेन भी होगा। आपने यहाँ से सुना होगा कि प्रोफेसर एससी अग्रवाल gave the first appointment to डॉक्टर सरू कुमारी। कुछ नहीं पता आपकी लाइफ में, आप जहां जाएं इनमें से कौन लोग आपसे क्रॉस करें। तो आप जैसा उन्हें सर्व करोगे, जैसा अपना कल्चर दिखाओगे, उसके इम्प्रेशन के बेसिस पर ही वो आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे।
तो आगे जितने सेशंस होने हैं आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको बोर भी लग रहा है, बहुत चीजें होती हैं नहीं समझ में आती हैं, तो आप ये सोच के मत बैठो कि सब समझ आएगा। आपको ये देखना है कि डिलीवरी कैसे होती है, बात कैसे कही जाती है, ये यहाँ तक पहुंचे तो हम भी पहुंचे। हम बहुत सोचा करते थे कि हाय हाय ऐसा कब होगा कि हम इस स्टेज पे आएंगे, हमें पता भी नहीं था कि हम ही इसी डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। इसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए इतना गर्व महसूस होता है कि हम तो पढ़ने आते थे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको बोर लग रहा है, चुपचाप बाहर चले जाना, लेकिन प्लीज शोर नहीं मचाना। मुझे कहलवाना पड़ा एक दो बच्चों से, उसके बाद हमारे अपने ही दो स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट लगातार बातें कर रहे थे। आप ये सोचिए हम यहाँ बैठे हैं, हमें यहाँ से सब दिख रहा है, जो स्पीकर बोलता है ना उसने मुकेश जी की करवट तक समझ ली कि वो ये चाह रहे हैं कि अब मैं खत्म करूं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, डिसेंसी बनाए रखो, डेकोरम बनाए रखो। बोर लग रहा है, काम है, धीरे से उठ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अरे हमारा भी ठीक कर दो, चल रहा है। हेलो 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 हेलो। अरे भेज दो कि क्यों कोई ना काम अंशुल भैया आप देख लो आके, 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया। ठीक है। अभी चेक कर रही हूँ, ले लियो आपने पिन तो नहीं है इसका कुछ, ये खुल रहा है, चार्ज भी लगा लो एक बार बस। डिस्चार्ज हो रहा है क्या? डिस्चार्ज बिल्कुल तो नहीं, बस हो जाएगा फिर।
इनसे दिक्कत आ रही है कुछ करने में? मेरे में तो कल कनेक्ट किया था आपने। ये करना पड़ेगा। चार्जिंग पॉइंट है इधर? मैं आपको देके जा रहा हूँ चार्ज, ठीक है? इसको मिनिमाइज कर लेना। केबल निकाल के दोबारा लगा। एक सेकंड। हाँ 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 बोलो। लैपटॉप मंगाया इन्होंने मेरा, दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा अपने। हाँ Hello, 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 hello. फुल स्क्रीन चाहिए। ये पीसी स्क्रीन का नहीं, उसको फिर वो शो नहीं होने का, एक चीज में दिखाई देगा बस, उसमें पीसी वाले में। छोटी स्क्रीन आ रही है भाई। Hello, 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 अब एक बार चार्ट पे लगा लो, इसमें hello, कल लगा लो। hello, 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 इधर से hello, hello, टैप से लगा hello, देना पीछे। पिन तो नहीं है ना वैसे इसका? पिन है। hello, 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 एक फिलहाल इसको चला hello, मैं hello, मैं आता हूँ। hello, 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 hello. बैग भी है। हाँ। Hello, 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 hello. तो लगा हुआ है।
hello, 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 hello. वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो आ गया। Hello, 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 hello. चलना हाँ हाँ पहुंच गया तो ठीक है, ठीक है, ये तो बता देता हूँ। मैं तो पकड़ूंगा एक से रहा हूँ। एक छोटा सा काम रखता हूँ, मैं छोटे वाले कैबिनेट ऊपर रखता हूँ। भैया वो जिस स्पीकर की वो होनी है ये तो और एक जो पीपीटी की थी वो अभी वो मास्टर ने बता दी वो शर्ट पहन के पूछना आपसे ना कौन इसका पासवर्ड पता नहीं क्या पूछा तुम इसका जो लैपटॉप दे गया ललित भारद्वाज ये केबल दूसरी वाली केबल पर रहा था उसमें लाओ मुझे पकड़ा हुआ इधर पे घोल तो क्या सोच लिया उसने ना बस ललित एल कैपिटल बाकी सब ललित एट द रेट है नहीं है कमल की ललित एट द रेट 0601
एक मिनट आ जाना यहाँ पे वो आगे डिस्प्ले ठीक है तो इस पे मीटिंग ज्वाइन कर देना फिर लगा दिया होगा मीटिंग कर दो उसमें से तो ये डिवाइस निकाल दो यूएसबी हब लगा दो सर निकाल के यूएसबी हब लगा दो यूएसबी हब लगा दो भैया ये जूम का लॉगिन क्या है आईडी बता 8800 ये रहा 000 97 85 हेलो 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 9494 हेलो क्या हो गया मैं टिक कोड बता रहा हूँ हेलो 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 कम कर हेलो हेलो और कम कर हेलो 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 और हेलो 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 बस तो एक ही शॉट है मेरा मेरी कोई दूसरा तो माइक से बोला मैं ठीक तो और वो पुराना ट्रांसफर बोल दे तो ट्रेन बोल रहा उसको बोल रहा ये प्रॉब्लम देखो पासवर्ड 404659 4659 हाँ साला का नंबर है 4640 कंफ्यूज हो गया व्हाट्सएप खोल लो भैया इसमें ये मुझे कई साल हो जाएंगे और पीपीटी भेज भेज के अंशुल भैया साउंड के लिए तो यहाँ ना बैठा दो सेट के पास हाँ बैठा दो वाला बता रहे दोनों डाउनलोड कर लेना भैया इस वाले पे लेवल पे चाचा नमस्ते नहीं नहीं उसमें हूँ प्रोग्राम चल रहा है कैंपस में हाँ सर ये जो बाहर रखी है लैब केयर की हाँ बाकी हिसाब लिखा हुआ था डायरी में सब देख लेना एक बार। ठीक
The device दे दियो मुझे तो लैपटॉप का काम हो जाना मतलब माउस की बात वही तो कर रहा हूँ इससे बोल रहे हैं बात कर रहे हैं दीपू भाई ये हो जाए आपको तो नाश्ता करना ईशु ईशु हेलो। को होस्ट बना दे इसे मैथ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। ठीक ठीक है। अरे थोड़ा उधर से बोलिए, आवाज चेक करनी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है क्लियर। ठीक हमारी है। ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया। एक बार ये वॉल्यूम वाले माइक से और बोलेगा जरा। हाँ अच्छा। हेलो। सर बढ़िया आ रही है बात। क्लियर है ये कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। नो सर, बिल्कुल एकदम क्लियर आवाज है। हेलो। स्पष्ट आवाज है, एकदम क्लियर। अच्छा एक बार आप वहां से दो चार लाइनें बोलेंगे कंटिन्यूटी में, कोई पैराग्राफ वगैरह पढ़ के बता देंगे। ये माइक नंबर 3 हेलो। थोड़ा सा बोलेंगे भैया, कुछ पढ़ के बोलेंगे एक बार। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स विभाग में आज एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसके माध्यम से छात्रों एवं अन्य लोगों को मैथमेटिक्स की जो होने वाली कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में बताया जाएगा। आवाज ठीक है भैया, क्लियर? ठीक है, थैंक यू भैया। एक तो खुली हुई है इसका नंबर है और ये चला लेंगे जी सर। ज्यादा और बाकी पहले टैबलेट है एक टैबलेट ये है एक टैबलेट ठीक सर ये अभी ना फोन आ रहा है आपको Recording stopped.
ये वेक्टर मैंने आपको पूछा ना नेक्स्ट तुम बताओ किसी को भी ये कैसा टाइम तो अभी बताता हूँ ना ये ये सर जी उससे पहले इसका रिमोट था फ्रीज करने का उससे बहुत आसानी हो जाती है फ्रीज का बटन बता दो आप बस अब तुम करते वो नाश्ता करेंगे ठीक है उसके बाद F11 से हो जाएगा तो ये कौन मतलब है F11 है इसको फुल स्क्रीन कर दे तो और इसे बंद कर दो मुझे इसमें चेंज करना बट और ये रिमोट भी होगा इसका रिमोट कहाँ है वो फ्री है तो देखना अगर आप वो नाश्ता करने जाऊंगी कौन सा है Here is the introduction of Professor Kapil Kumar Sharma. Doctor. Hello. Professor Kapil Kumar Sharma is Recording in a professor at progress. South Asian University, New Delhi, specializing in numerical analysis, singularly perturbated problems, numerical analysis of partial differential equations, finite element analysis. He earned his PhD from IIT Kanpur in 2004 and has held academic positions at Punjab University and INRIA Futures, France. With over 75 research papers, 2150 citations, and an H index of 22. He has guided numerous PhD and MSc students. He has served annuals and received the JBS medal and proctor and president of the sports board at South Asian University, contributing significantly academy and research. Sir, please come. Thank you for giving nice introduction. And I'm really feeling honored and nervous also. I mean, you can understand standing before a teacher. So I have both my teacher, sir, directly
taught me during my MSc at Kurukshetra University, and I have inspired by Professor S.C. Agrawal. It's fine, you know. Yeah. So I did graduation from Meerut University. I did graduation from Machra Degree College, BSc. Then I moved to Kurukshetra. So that's why I was aware about Sir, and many time I met and inspired by him. So really, it is a little bit nervous also. So today I will try, and of course, already two keynote addresses you have heard. So I don't think it's a keynote address. Sir also giving very nicely, and then Vasist sir both giving the nice talk and tell how mathematics is useful. You see that after evolution of high power computing. So if you see in last 3 decades, there is not much advancement in the theory of mathematics. But after evolution of uh, high power computing machines, so now we are able to see the real application of mathematics. If you see in the weather forecasting, still we are using the same bunch of PD which was used before 40 years. So still the modeling, but now you see that how reliable or accurate information weather forecasting we are getting. So that is a use of high power computing. Now we are able to, compute the solution more precisely. Earlier also we were using the similar or same, the model, but we are not getting the accurate information. So, sir gave numerous example, and Vasisth sir also. So I need not to reiterate. But before we start my talk, so I will tell you, particularly the research scholar and the PG student, that how we use basically mathematics in to solve or to give the real life answer to the real life problem. So if you see how we do, or how, in all area of mathematics research advances. So I will give you that flavor. So if you see, first what we do, we have a real life problem. So then we convert that real life problem into a mathematical problem, which generally in more scientific terminology we call mathematical model. Once this, mathematical model, we convert a real life problem into a mathematical problem, then we study that mathematical problem is well posed. Well posed means, so what we have real life problem. Using the concept of mathematics and physics of the problem, we convert this real life problem into a mathematical problem. So once we convert that real life problem into a mathematical problem, so next, research start, or the next question arises, that whether your problem is well posed. What is the meaning of well posed? Well posed means the problem has a unique solution, and that solution must be stable. But we should not, just, doing the step is going in that way, or it is written in a book. We should analyze, because after completing the master, the meaning of MSc is Master of Science, and the meaning of PhD speaker सब्जेक्ट की मींस हमें हवा से चीजें निकालनी है. तो ये नहीं हुआ कि भाई हमने प्रॉब्लम ली उसे कन्वर्ट कर दिया. व्हाट्स गोइंग ऑन इन रिसर्च पर्टिकुलरली इन इंडिया, कि भाई लिया ये स्टेप लिखा हुआ है. अच्छा स्क्रीन पे लिख सकते हैं. ओह दैट्स ग्रेट. तो क्या किया कि भैया एक पेपर लिया हमने, उसके पैरेलल दूसरा पेपर लिया, उसमें ये स्टेप्स थे कि भैया ये इसे कन्वर्ट किया है, एक पैरामीटर और हमने इसमें ऐड कर दिया. देन नेक्स्ट हुआ कि भैया अच्छा इसकी जो है
वो चेक करनी है, वेल पोजनेस, उसके सर्टेन स्टेप्स है मैथमेटिकल कि भी वो कर दिए, बट हमें पहले ये सोचना है कि भाई क्यों करें, व्हाट इज द नीड, कि भाई ठीक है हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद जो है चलो सॉल्यूशन निकाल दिया, यहाँ तक तो ठीक था। फिर वेल पोजनेस की क्या जरूरत है, कि यूनिक सॉल्यूशन हो और स्टेबल हो, तो दोनों चीजों को हमें जस्टिफाई करना है। तो पहला करते हैं कि भाई यूनिक सॉल्यूशन की क्या जरूरत है। भाई सपोज करो कि मुझे जो है यहाँ से जाना है कुरुक्षेत्र और मे बी मेरठ कॉलेज, देर आर आई मीन मोर देन वन वेज टू गो, सो आई वुड बी, बस तो ये कि भाई जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली यूनिक हो, कि भाई एक रास्ता हो, यू गेव मी 100 वेज, so I would be happy that tell me the one way which, so the problem, the solution must be unique. नेक्स्ट कि भाई स्टेबल क्यों होना चाहिए, चलो ठीक है यूनिक की फिर भी आ गई, व्हाई सॉल्यूशन मस्ट बी स्टेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, एनी रिसर्चर हु इज डूइंग रिसर्च कि भाई स्टेबल क्या हुआ, कोई भी मैथमेटिकल इन जनरल, नॉट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेदर इट्स a crypto a problem from the cryptography, any problem, the solution must be stable. What is the meaning? Yeah, yeah, please. So there are two things, कि भी जब भी कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है, there are two things, one is the input and another is the output, ठीक है नहीं। So basically stable का मतलब क्या हो गया, the change in output must be bounded by change in input. So in any platform you are doing different things. What is the need of that? Because once you are using the board, so then nothing to worry in that case. Anything, I mean, any computation you are doing, so that's fine. But once you are using the any machine, I'm telling you, any machine you are using, what does it mean? Then you are not playing with the exact data. You are playing with the approximate data. Till now, we do not have any computer in the we do not have any supercomputer which can store this number 1/3 on the globe. We do not have. We are once we feed this 1 by number through our keyboard, so some approximate number of this is feeding. Am I right? So there is no machine till now. So what it means that we are not playing with the exact means. We are, I mean, playing with some approximate value. Means error would be there, nearest number. So it means that if your solution is sensitive to the input, so it means that it will blow up. We पहुंचना था पटना पहुंच गए झुमरी तलैया, ठीक है वो तो चला, तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, स्टेबल, कि भाई स्मॉल चेंज in input makes a small change in output. In other words, you will say that the output, change in output is bounded by the change in input. So that's why stability is important. So once we study that the well posedness, so next question comes for the simulation solution. So now here also, if you see that, then solution, we are looking for the solution. So in that case, if you see that, if I mean talk about the differential equation platform, so the mathematical differential or the mathematical methods by which we can find the exact solution of a differential equation. So then differential equation you can count on finger. Am I right? So most for the practical
problem or the mathematical models which model the practical problems for them. We do not have any procedure by which we can find the exact solution. Though the problem is well posed, means it has a unique solution. I give you I mean very pro example. If I say you, can you find solve this differential equation? Y prime equal to fxy and y at x 0 is. This is it seems to be very to a problem. It's a first order initial value. So anybody can tell the answer to this? Hmm. We try कर लेना. Still, I am on. I'm on board of some journal of journals. So I am damn sure that that result will be published. Huh? So we do not have any procedure by which we can find the exact solution of this. Though this problem is well posed, means it has a unique solution. F has a nice property. So if you see the particular example of this Bernoulli uh, differential equation, you know, first order, a particular type of non-linearity is there. He give the solution. So beyond his name, we know that. Legendre, Bessel, so that. So it means that very few, or we can say that very few mathematical models or problem which model real life phenomena has a exact solution. Has a exact solution means we have procedure. It has exact solution. It has exact solution, and that is unique, stable, everything. But we do not have any procedure to find the exact solution of that. So one way we should give up that. hmm? Another way we should find some approximate information. And here I make a claim that in most of the practical situations, we are more than happy to have the approximate information or approximate information. Are more than sufficient to solve our problem. For example, in weather forecasting, suppose sir has to go tomorrow to Kurukshetra or maybe day after tomorrow. So he would be happy to know whether it would be a or in a rainy season, that whether it would be a rainy day or non-rainy day, or particularly whether it would be heavy rain or light rain. This information is more than sufficient for the user, rather than how much exactly would be the rain. In financial forecasting, in near future, whether the trend of the market will be upward direction or downward direction, this information is more than sufficient. If it would be in upward direction, so the investor will infuse the money in the market. If it would be downward direction, so he will withdraw money. In population forecasting, that how much would be the population of Meerut after 10 years. So I think in lakhs or more precisely, even lakhs would be more than sufficient for, the policy maker to use that information, or more precisely, maybe in thousands. So nowhere, the exact information is required or we can say that in certain cases you will see that because there is no free lunch. If you are, finding, even you have the procedure to find the exact solution or exact information, maybe that procedure may be complicated. But to simplify that, you are getting the information, approximate information, so that will give you maybe in less time you will have that. Suppose you need some information on that uh, operation theater table, so you cannot wait for hour. You need maybe not exact. Doctor need at least some vague idea we have. So in that way he can utilize that and may use in many ways. So approximate information is more than sufficient.
So the method, or we can say that uh, the, 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 the method to find approximate solution of a mathematical problem comes under the umbrella of numerical analysis. Numerical analysis is consisted of two components. Number one, the development of method to find the approximate solution of approximate solution of a mathematical problem. Now the next I think this statement is justified by the example which I have given, or you can find more example. Now the second component, analysis of error. Once we are saying that approximate, it means that error would be there. So we need to analyze that error. So what is the fun for doing that? Hmm? Because what is the fun for doing that? Because in that case, we if you see that if I say that 100, so 100 is a unique number. But once I say that approximation of 100, so we have a number of that. 99 is also, 90 is also an approximation to 100. 110 is also. So which one I should take? Hmm? So you see, I mean, suppose I have to plan my journey from here to Kurukshetra. Exact time it's around 4 hours. Sir, Vasis sir told me, okay, approximately it will take 3.5. Sir told it will take 4.5. So basically, this information is more than sufficient for me. So I'm basically allowing error of order 10 raised to the power minus 1. But if you remember, there was a war between basically majorly between US and Iraq, Gulf War in 90s. So that time, I mean, nowadays every country has, but that time US has the Scud missile. What it used to say, it used to penetrate the missile in sky, hmm, which Iraq used to, I mean, send to the US Army. One Scud missile was failed, and that time I think many soldiers were died, and more than 100 were injured. सो दैट टाइम भाई अब तो यूएस में भी थोड़ा सा हो गया बट उस टाइम तो एक आदमी भी मर जाए तो वो भाई हाहाकार हो जाता था यूएस में so they basically analyzed what happened. So then they found that there was some error of order 10 raised to the power minus 8 in their calculation. So at one place, we are allowing error of 10 raised to the power minus 1, and on other place, we are not allowing error of 10 raised to the power minus 8. So now once we are developing the method, so we have to tell to the user that this method has this much error. Now it depends on the user. If we are using in this situation, suppose a method which we have error 10 raised to the power minus 5. So if we are using in first situation, so I can use that method. But in second note. So that's why error analysis of a method is also important. And there are only two type of error. If you observe, in whatever platform you are working in approximation theory, only two type of error would be there. All you are aware about. One is human error, human error, and another is machine error. Both you know, but I coined these word intentionally. Human error means how we define human error. The error occurred due to the limitation of us to solve the problem that we call human error, which you might have heard truncation error. Truncation error is nothing that you are truncating the series. Whatever approximation you are making to solve the problem, and due to that error occurred, that is known as the truncation error or human error. Machine error. What is machine error? Means the error because every machine has finite capacity. As I have given you one example, 1/3. We do not have any machine, any computer which can store that. So we have to crunch the numbers. Am I right? So the error
occur due to limitation of machine is known as the machine error or round off error. So in any platform, you have to address these two. For example, in differential equation. So differential equation, you might have heard consistency. Am I right? Hmm? Once you develop method to find the approximate solution of a differential equation, so you have to address both these error, means machine truncation error as well as round off error. So the truncation error is addressed in the platform of the differential equation by consistency, whether your method is consistent or not. And round off error is addressed by दूसरा क्या करते हैं, कन्वर्जेंस जो है किसी मेथड की, व्हेन वी से दैट मेथड इज कन्वर्जेंट, कंसिस्टेंट है, एंड जो दूसरी राउंड ऑफ एरर को एड्रेस करेगा, स्टेबल, कंसिस्टेंट हो और स्टेबल, कंसिस्टेंसी प्लस स्टेबिलिटी इंप्लाइज कन्वर्जेंस, एम आई राइट? तो यही तो था. तो कंसिस्टेंसी मतलब ट्रंकेशन एड्रेस एरर को हम एड्रेस कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी मींस round of error. If you are not using machine, so there is no need to address the stability issue. और मैंने बताया कि भाई स्टेबिलिटी इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट जो डाटा है उसके साथ हम प्ले कर रहे हैं. मेथड जो है हमारा मस्ट नॉट बी सेंसिटिव टू द इनपुट. थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन भी ले लें, इनपुट में थोड़ा गलत इनपुट भी दे रहे हैं, तो भी मतलब सॉल्यूशन हमारा ब्लो अप, दूर नहीं भागना चाहिए, इस कमरे के अंदर ही हो, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं कि भाई उधर चला गया. सो इन दैट वे वी एड्रेस दीज टू एरर, और आई मीन इन एनी प्लेटफॉर्म यू नीड टू address these once you are using the approximation. So first, what we do when we develop the method to find the approximate solution, or numerical method we say, we have to prove that the method is consistent and stable. It's fine. So now we come to our topic, that singularly perturbed problem. So singularly perturbed problem is a class of differential equation, a class of differential equation, particular class of differential equation, which have certain properties, and I will just going to tell you. So when a mathematical model is associated with a phenomena, the researcher generally try to capture what is indispensable, continuing to have the important quantity and excluding the negligible. As I told you that the mathematical models or mathematical problem, which model real life problem are very and times complicated in nature. तो अब उसमें हमें स्टडी क्या करना है, पहला स्टेप को स्टडी जैसे ही कन्वर्ट किया हमने रियल लाइफ को मैथमेटिकल मॉडल में, हमें वेलपोजनेस वो करनी है. वेलपोजनेस मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, यूनिक सॉल्यूशन, और दैट मस्ट बी स्टेबल. तो फर्स्ट तो वही हुआ. तो उसे करने के लिए ही क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, मॉडल को सिंप्लीफाई करेंगे. अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि भी जो नेग्लिजिबल चीजें हैं, जिनका छोटी छोटी चीजें उन्हें डिस्कार्ड करें. तभी तो सिंपली है, पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, उन्हें तो कैसे करोगे, पैरामीटर को कम करोगे, कम किसे छोड़ोगे, जिसका नेग्लिजिबल. बट समटाइम व्हाट्स हैपन, दीस नेग्लिजिबल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस. So we have to analyze that. So the model, अच्छा इस पर काम नहीं करेगा ना, the model that would be obtained by maintaining these small parameters are called perturbed model. No, ये मैं सर इस पे काम नहीं, स्लाइड वाला करो, पॉइंटर नहीं काम करेगा ना सर इस पे, नहीं इस पे नहीं करेगा, यहाँ तो कर जाएगा. ये है
स्लाइड वाला तो इट्स वर्किंग. So the model that would be obtained by maintaining these small parameter, these small parameter is called perturbed model. It could be any, it could be algebraic, it could be integral, it could be differential equation. Of course, we will today restrict our study to the differential equation. Perturbed model is a differential equation. Otherwise, when you are, putting these small parameter to be equal to 0, that model is known as the unperturbed model or reduced model. Am I right? Just keep these two terms at your tongue. So perturbed here, as I told you, today we will just study perturbed model problem as a differential equation platform. When differential equation is said to be perturbed, when the highest order term of the differential equation is multiplied by a small parameter. So that type of differential equation is classified as the perturbed differential equation. Now perturbed differential equation may be of two types, regularly perturbed or perturbed. Am I right? Regularly perturbed or singularly perturbed. Reduced modal or perturbed problem is obtained by putting these small parameter to be equal to 0. For example, if you see that this is a very, very small quantity compared to 1 is multiplied by the highest order derivative. अच्छा, many places you might have heard, भाई मैं ये भी तो कर सकता था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0. ये थोड़ा सा awkward है, but intentionally you might have observed that it is written. So what was the reason? Is there any reason for that? Because second derivative represent the diffusion. So basically what happening we are giving the energy to the system, and that is diffusing, means going negative, going to 0. So that's why we keep this minus sign here in the second derivative. So this is a perturbed problem, example of perturbed problem. Now classification of perturbed means regularly when we say that, as I told you, this perturbed problem is further classified into two classes. Okay? Regularly perturbed and singularly perturbed. When we say that a perturbed problem is a regularly perturbed, when the solution of the original problem converge to the solution of the unperturbed problem as epsilon tends to 0 or as perturbation parameter tends to 0, then we say that the problem is regularly perturbed. Otherwise, if it doesn't happen, then we say that the problem is singularly perturbed. And if we talk about the solution of regularly perturbed problem, they are very nice fellow. जो रेगुलरली perturbed प्रॉब्लम है वो क्या है, बहुत नाइस. कोई whatever standard methods you have, we are just now talking about the when I'm saying the method to find the approximate solution है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन में पहले ही कह दे एग्जैक्टली तो बात ही नहीं करनी है, जरूरत भी नहीं है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, और है भी तो हम नहीं कर रहे. We are talking about the method to find the approximate solution, or in the scientific language, numerical methods. So all the standard numerical method will work as it is, nothing to worry. And for this, what about for this? We have, okay, but your standard method will not work. So here the question arises, sir, एक तरफ तो जो है तो इसका मतलब क्या हो गया, भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है, तो आपका टॉपिक ही सिंगुलरली परटर्ब्ड है. जो अच्छा आदमी है उसको तो उसे समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक तो उसे करना है ना, जो बुरा है वो भी नहीं है, पर कई बार बुरे आदमी की भी जरूरत होती है. कई बार जो है झगड़ालू आदमी है, एक है बहुत सीधा साधा, युद्ध हो गया है तो भगवान सीधा साधा तो काम नहीं करेगा ना, वो झगड़ालू ही चाहिए. This here the similarly perturbed problem are very, very important.
क्योंकि जब इनका बिहेवियर देखोगे ना तब पता चले क्या होता है। सॉल्यूशन बिहेवियर ऑफ एसपीपी है, रेगुलरली पर्टर्ब को छोड़ दिया हमने। वैसे भी जो है अभी ध्यान जो जो क्लास में थोड़ा सा नोटोरियस बच्चा उस पर ज्यादा देते थे, सर सर से पूछ लो, मुझे तो ये कोने में बैठा देते, जो बैठा ही सर ये कुछ नहीं करेगा। जो ऐपदार थे उन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा रखते थे सर। तो यही होता है ना। तो ये क्या है सॉल्यूशन, कैसा होता है ये, एग्जिबिट द लेयर बिहेवियर। मतलब मॉडलिंग में क्या करते हैं हम, कि जैसा मॉडलिंग में फिनोमिना हो रही है उसके लिए उसी टाइप का मैथमेटिकल मॉडल देंगे ना। तो ये जो लेयर बिहेवियर है ये बहुत प्रैक्टिकल है? भाई सडनली हम जो है 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, आगे से जो है या कुत्ता आ गया है, तो क्या हमारा क्या मोटिव होगा कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दैट 100 स्पीड मस्ट गो डाउन टू 0। तो वो क्या हो गया, लेयर बिहेवियर मींस इन अ स्मॉल रीजन रैपिड चेंज इज देयर। ये 100 से एकदम, अब तुम सोच लो ये टाइप की फिनोमिना का हम वेरी आई मीन फ्रीक्वेंट इन नो स्लिप सर फ्लूइड मैकेनिक्स में। नो स्लिप क्या है, फ्लो चल रहा है, फ्लो चल रहा है, और हमें क्या है नो स्लिप कंडीशन को इम्पोज करना है। तो क्या होगा कि 100 की स्पीड से वो स्ट्रीम चल रही है या उसके पर एज जो है उस पर क्या होना चाहिए 0। नो स्लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो वहां लेयर होगी। तो फिर वहां कौन काम आएगा, जो झगड़ालू बच्चा है, ये एकदम बिहेवियर चेंज कर ले, तो ये यही होगा। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, पढ़नी तो पढ़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसमें क्या है आज टॉपिक कि भाई जो सिंगुलरली पॉइंट आउट प्रॉब्लम है, चैलेंजेस क्या है और उनकी मिटिगेशन क्या है? यहीं तक ही मैं कराऊंगा, अगर सर अलाउ करेंगे तो व्हाट आर द आई मीन रिसेंट डेवलपमेंट 3 मिनट में वो मैं दे दूंगा। मेरी ट्रेन भी है, मुझे जाना है, तो मैं ज्यादा नहीं पकड़ूंगा। सब पहले जो है, क्योंकि 2 बजे मुझे निकलना पड़ेगा, एटलीस्ट नॉट मोर देन 15 पास्ट 12 है। ये कितना टाइम लगेगा यहाँ से स्टेशन ये वाला? अच्छा ये वाला जो है कैंट वाला आधा घंटा, हाँ तो 2 बजे कंप्लीट कर दूंगा, उससे पहले ही। तो लंच तो हैवी आपने ठीक करा दिया सर। अब जितनी मतलब वो तैयार किया है गैस बनी है वो निकालनी भी तो है। तो उससे तो अगर लंच गैस अंदर रहेगी और लंच कर फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो लंच ना भी हो पर जितना ये तैयार है उतना तो हमें डिलीवर करना पड़ेगा। So if you see, so this type of solution behavior would be there. So basically why it's happening? भाई अगर सपोज करो एप्सिलॉन तुम्हारा उधर 0 हो गया, और बाउंड्री कंडीशन है, अगर डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव एक रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले में ही ले लें हम, ये जो एग्जांपल है इसमें अगर मैं ये 0 कर दूं ये वाली, तो पहले 2 डेरिवेटिव थे, अब एक ही डेरिवेटिव है, ठीक है नहीं? और 2 तुम क्या कह रहे हो कि 2 रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो भाई, तो वो तो नहीं फिजिबल है ना। वो तो फिजिबल नहीं है। उसके लिए इसका मतलब एक को तो सेटिस्फाई करा दोगे, एक कंडीशन को, एक जो है अनसेटिस्फाइड रहेगी, बस वो जिधर से करा उधर से अपना उसमें जा रही है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये चल रहा है। और सडनली जो है उसे याद आया कि यार बाउंड्री पर जब पहुंच गए मुझे तो यहाँ जाना था, वो ऐसे चल रहा है, ऐसे स्मूथ स्मूथ स्मूथ, सडनली जैसे ही बाउंड्री के पास आया उसे वहां पहुंचना है, तो एकदम रैपिड चेंज होगा ना। सो दैट्स व्हाई यूज द further SPP, because these are very difficult. It's not an easy task when you go for the solution methodology. जो तुम्हारे स्टैंडर्ड टूल्स हैं वो बताऊंगा कैसे फेल हो जाते हैं, वो सारे फेल धरे के धरे रह जाएंगे। तो क्या करा जाए? एक तो ये है कि यार बिल्कुल आंख बंद करके चले जाओ, हमें यहाँ छत पे आना है। एक तो ये कि नीचे ही बाट देखते रहे, यार छलांग इतनी बड़ी लगा दूंगा जब छत पे पहुंच जाऊं, या ये है कि यार थोड़ा सा स्टेयर्स यूज कर ले। तो हमने क्या किया, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी वी फर्दर क्लासिफाई दिस सिमिलरली पर्ट आउट प्रॉब्लम, नॉन टर्निंग पॉइंट प्रॉब्लम एंड टर्निंग पॉइंट प्रॉब्लम। ये क्या हो गई, ये और बवाल हो गया।
कि भाई टर्निंग पॉइंट प्रॉब्लम एंड नॉन टर्निंग पॉइंट प्रॉब्लम, कि भाई जैसे अगर वो तो था ही, अगर कन्वेक्शन डिफ्यूजन टाइप हम प्रॉब्लम ले रहे हैं वही होगी, रिएक्शन डिफ्यूजन में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव वुड बी देयर। कन्वेक्शन मींस अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव किसे रिप्रेजेंट करता है? सर जब बार बार कन्वेक्शन को इकट्ठा है, तो ये थोड़ा सा देखो टर्मोलॉजी पता होना चाहिए हमें, मतलब वेगली ये नहीं करना है कि ये पेपर लिया इसके पैरेलल एक पेपर और लिख दिया है, हमें वो तो नेचुरली वो भी देखना है, बट एट द सेम टाइम भी हमें ये भी अपने से ही पूछना है क्यों करें ऐसे, क्या जरूरत है, क्या है ये बवाल। तो थोड़ा सा ये, अब ये कोई सुपरवाइजर या गाइड नहीं बताएगा, ये तो खुद ही हमें करना पड़ेगा ये बोल, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कन्वेक्शन डिफ्यूजन में कि भी अगर साथ के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन टर्म है, वो पर्टर्बेशन पैरामीटर तो अपना बुराई कर ही रहा था, साथ के साथ जो कन्वेक्शन कोफिशिएंट का कन्वेक्शन टर्म का जो कोफिशिएंट था वो भी क्या हो रहा था, वेनिश हो रहा था, जीरो हो रहा है। इफ इट हैपन सो देन that class of singularly perturbed problem is known as the turning point problem, otherwise it's a non turning. Why study, अब वो तो मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये एग्जाम्पल अब इसमें ये वाला इशू है भाई, इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एसपीपी। अब पहले वो कर लेना कि भाई दिक्कत क्या है, कैसे रिसर्च करें, कि भाई ऐसे ही तो करेंगे, पहले ये समझ लें कि भाई जो है हमारे पास वो हथियार चलाने में कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर जहां दिक्कत आ रही है उसका ट्रीटमेंट करा जाएगा। ठीक, तो चलो करते हैं, ये हमने प्रॉब्लम ले ली। अब थोड़ा सा वो भी कर लो भी, जो रिसर्चर है या पीजी स्टूडेंट है, थोड़ा होमवर्क भी करो करो साथ साथ कैलकुलेशन। तो ये प्रॉब्लम ले ली, क्या है ये कौन सी टाइप की प्रॉब्लम है, रिएक्शन डिफ्यूजन। रिएक्शन मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव किसे रिप्रेजेंट करता है, डिफ्यूजन को, फर्स्ट कन्वेक्शन, और जो डिफरेंशिएटेड टर्म है रिएक्शन। सो दिस इज अ रिएक्शन डिफ्यूजन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस पर हम लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, फाइनाइट डिफरेंस, बढ़िया मेथड है। फाइनाइट एलिमेंट तो ये बाद में आए, फाइनाइट डिफरेंस तो बढ़िया वाला ना, वही पहले लगाते हैं, उससे देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। फाइनाइट डिफरेंस में बेसिकली क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव है उसे क्या कर दोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंस, तो यही तो करते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे एल्जेब्राइक में कर लेते हैं कन्वर्ट, डिफरेंस इक्वेशन एल्जेब्राइक की तो हो गई। थोड़े से एक्चुअली वर्ड जो है वैसे हैवी कर रहे हैं, बट कर वो ही रहे, वे एल्जेब्राइक तो आराम से सोल्व कर लेते थे, उसी में तो करोगे ना जिसमें आपको पता है। अदरवाइज ये हुआ कि भैया पहले क्या किया हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल में कर लिया, अब इंटीग्रल का सॉल्यूशन ढूंढते फिरो। मतलब ऐसे में कन्वर्ट करो ना कि जहां हमें पता हो चीज, आसमान से गिरे खजूर पर लटक गए, है तो हमें जो है एल्जेब्राइक इक्वेशन जो थी उसका सॉल्यूशन हमें पता था, उसमें कन्वर्ट कर लिया, मींस डिफरेंस इक्वेशन में, मींस वी अप्रोक्सीमेट द डेरिवेटिव बाय द डिफरेंस कोसेंट, है वही तो क्या वो किससे करते हैं, इसकी डेफिनेशन से। तो ये इसकी डेफिनेशन है ना, डेरिवेटिव के फर्स्ट डेरिवेटिव की यही डेफिनेशन है ना। अब जितना h छोटा होता जाएगा उतना ही, इसका मतलब जैसे ही ये हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वलिटी विल बिकम इनइक्वालिटी, मींस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है नहीं। अब बेटर अप्रोक्सीमेशन कैसा होगा, जैसे जैसे h छोटा होता जाएगा वो बेटर एंड बेटर मिलता जाएगा। तो यही करते हैं हम इसमें, डिफरेंस में इन्हें हटा देंगे, सेकंड को सेंट्रल से कर देते हैं, इसे के दो है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है करो। तो इसे अप्रोक्सीमेट करो, ठीक है, बाय द फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ये आ गया, ठीक है कि नहीं। ये आ गया। अब ये तो चलो ठीक था भाई, थ्योरेटिकल वे में ये हो गया, बट जब फाइनाइट डिफरेंस में आएंगे तो क्या हो गया, बेसिकली हमारी प्रॉब्लम किसमें थी, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में। कंटिन्यूअस जो डोमेन था उसका क्या था, इनफाइनाइट डायमेंशन, उससे हमें फाइनाइट में लाना है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, फाइनाइट डिफरेंस में क्या करते हैं,
जो डोमेन है कंटिन्यूअस डोमेन उसे किससे अप्रोक्सीमेट करेंगे? डिस्क्रीट डोमेन से। एम आई राइट? डिस्क्रीट डोमेन से अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है नहीं? कंटिन्यूअस थे, बीच में वो पॉइंट ले लिए, जैसे 0 to 1 है ये, इसे जो है ऐसे ले लिया, ठीक है नहीं? अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ये तो पढ़ा होगा, टाइम कम है, और चलो वो रिसर्च का तो क्या आएगा ये और बता देता हूँ, शायद यूजफुल हो, बाकी हो कि नहीं हो। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हमने पढ़ा है, किसी भी कोई भी अप्रोक्सीमेशन वो होगी तो बेसिकली उसमें क्या करते क्या है हम? हम्म भाई उसमें क्या करते हैं हम बेसिकली? जो हमारे मतलब सॉल्यूशन है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन जनरेट करेंगे, ठीक है नहीं? जैसे एफ एक्स इक्वल टू 0 को हम सोल्व करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल मेथड से, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स मेथड, तो बेसिकली क्या करते हैं? भाई सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन कर देंगे ना ये एक्स एंड दैट कन्वर्ट्स टू एग्जैक्ट एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि नहीं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो ऐसा ही होना चाहिए। तो जो ये फाइनाइट डिफरेंस ले रहे हैं तो इसमें भी सीक्वेंस होना चाहिए। तो कभी सोचा है कैसा सीक्वेंस बनता है इसमें? या अगर सपोज करो कि आपको ये नहीं पता है कि भाई एग्जैक्ट सॉल्यूशन एरर जब फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? इसमें कैसे करते हैं? दो जो टर्म होती हैं पहले वाली उनका डिफरेंस ले लेते हैं। भाई एग्जैक्ट पता होता, अगर जाई मुझे पता होता तो मैं एक्सेल को क्यों नहीं पता, तभी तो करना पड़ रहा है। तो अगर एरर तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो इसे इनफाइनाइट है ना सीक्वेंस, तो इनफाइनाइट टर्म तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। और कब टर्मिनेट करोगे अपनी प्रोसेस को? कि जब तुम्हें डिजायर एक्यूरेसी मिल जाए, मींस योर एरर इज लेस देन द योर टॉलरेंस। एम आई राइट? तो इसमें कैसे करते हैं फाइनाइट डिफरेंस या जो डिस्क्रिटाइजेशन मेथड है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन? इसमें अच्छा सॉल्यूशन यहाँ क्या है? रियल। भाई यहाँ इसका जो सॉल्यूशन है क्या है? रियल नंबर। अच्छा, इसका क्या सॉल्यूशन है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इसका क्या होगा भाई? अरे ऐसे नहीं, देखो यार, एमएससी तो कर चुके ना, मास्टर तो हो गए हो। ये तो फिलोसफी है, पीएचडी वाले भी हैं। अरे एमएससी सेकंड ईयर वाले भी होंगे, उन्होंने भी ये तो पढ़ी है। पीएससी वालों ने भी पढ़ी है, मास्टर की नहीं जरूरत है। इसका फंक्शन होगा यार, है सम काइंड ऑफ जीएक्स होगा नहीं? तो ऐसे क्यों मतलब देख रहे हो? जीएक्स एक फंक्शन होगा, तो अब फंक्शन होगा, बट यहाँ जो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं उसमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है हमें? y0 y1 y2 y3 डॉट डॉट yn। तो मतलब हमें यहाँ सीक्वेंस कैसा और कैसे मतलब बेटर एंड बेटर कैसे मिलेगा इसमें? अगर हम यहाँ सपोज करो ये मेरा कंटिन्यूअस है, मैंने जो है फर्दर क्या करोगे? जो आपका डिस्क्रिटाइजेशन है उसे फाइनर एंड फाइनर। तो ठीक है नहीं, ये हो गया y2n है। तो जैसे जैसे ये जो है, यानी ये क्या हो गया इसमें सीक्वेंस किसका होगा? डिस्क्रीट फंक्शन का। डिस्क्रीट फंक्शन ही हुआ ना, है डिस्क्रीट फंक्शन का सीक्वेंस होगा। और वो फंक्शन का जो सीक्वेंस है वो किसे अगर मैं इसे कैपिटल, इसे पूरे वेक्टर वेक्टर को मैं कैपिटल yn बोल दूं, इसे कैपिटल y2n बोल दूं, एम आई राइट? एज कैपिटल n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये किसे कन्वर्ट कर जाएगा? कैपिटल yn gx को। क्योंकि तुम्हारा जो डोमेन है एज n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये जो डिस्क्रीट डोमेन है वो कंटिन्यूअस डोमेन पे ओवरलैप हो जाएगा। इस टाइप से जो है हम जनरेट करते हैं, ठीक है? और एरर कैसे फाउंड करते हैं इसमें? जो कॉमन नोड है उनका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है नहीं? कॉमन जो नोड है
उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगी, एरर। फिर एरर भी क्या होगा, वेक्टर मिलेगा इसमें। तो बट तो अगर वेक्टर है, जैसे भाई इसमें था एक्सएन वाले में, तो एरर क्या होगी हमारी, एक्सएन मोर एक्सएन माइनस वन। एम आई राइट? भाई रियल लाइन पे जो है डिस्टेंस किससे मेजर करते हो, भाई एब्सोल्यूट से। अब अगर स्पेस आप बढ़ा दोगे, आगे जाओगे, तो फिर क्या हो आ जाता है कॉन्सेप्ट, नोम। ठीक है नहीं भाई, नोम कहा जाएगा तो उसमें नोम ले लेंगे, मैक्सिमम नोम इज द बेस्ट वन फॉर द अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। अच्छा, बेस्ट वन क्यों है भी मैक्सिमम नोम, अभी सोचा है? क्योंकि इट गिव्स द एक्चुअल, इट विल गिव द डिफरेंस पॉइंट वाइज। इफ यू टेक L2 नोम और LP नोम, उसमें क्या होगा, दैट इज द एवरेज नोम। कि भाई एक जगह हो सकता है डिफरेंस इतना हो, है, और बाकी जगह क्या सारे में जो है थोड़ा 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 है। तो एवरेज नोम में तो वो कन्वर्ज कर रहा है, पर पॉइंट वाइज वो डाइवर्ज कर रहा है। सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम नोम इज द best one, but it is not always possible to find the error estimate in L infinity norm. So okay, we are coming back to this. We have only 10 minutes. So okay, this so now we are if I mean converting that original uh, continuous problem into a discrete problem. Now it is defined over xi, xi minus 1. Xi minus h means if you are taking h is uniform mass, so xi minus h is xi minus 1, xi plus h. So rather than this here, it is written in the basically bracket. So this is not the right way. This is not equal to, here it's mistaken. But this is the right one. Means ui, I mean to say here that ui is not equal to u at xi. Am I right? ui is not equal to u xi. Why? सर आप कोई बताओ हैं भाई, हमने तो यही पढ़ा है, आपने भी गलती से लिख दिया है, ui इज नॉट इक्वल टू u xi। तो यहाँ अगर पीछे जाओगे, अगर यहाँ लिमिटिंग होगी, तो ये वाली थी ना, मैं इससे करूंगा लिमिटिंग केस, तो बात ठीक है नहीं? जैसे ही लिमिट हटा दूंगा, समझ गए नहीं, तो ये इनइक्वालिटी, दिस इक्वालिटी विल बिकम इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करो, ना तो मुझे ये पता है लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, ना ये पता है कि राइट हैंड साइड बड़ी है, तो कुछ भी नहीं पता ना, तो सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या किया हमने, मान लिया कि लेट अस बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां फंस गए, लेट अस एज्यूम, ये तो बहुत अच्छा टूल है ना। तो मान लिया कि नहीं हो रहा था, फिर मान लेते हैं कि इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल ले लिया। अब जैसे इक्वल लिया, इसका मतलब कि भाई u at xi इज नॉट इक्वल टू ui, तो हमें कुछ और सिंबल देंगे, तो हमने दे दिया ui इज एन approximation to u at xi. Whatever I am getting by changing that inequality equality, so that is approximation of u at xi. ठीक, तो ये कर लिया, ठीक है नु सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपना सिस्टम बन गया, सिस्टम बन गया ना, ए यू इक्वल टू एफ। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे इसे सोल्व करने के लिए, सर जो सा आपको याद हो वो कर लो, हमें तो कुछ याद नहीं है, हमें तो लंच दिखाई दे रहा है, 1 बजे होना था, आपने जो है देर से करा दिया। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो शुभम तुम ही बता दो। तो ये मेरा पोस्ट डॉक स्टूडेंट है, अभी ये DU में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, सर जोन सा आपने याद पढ़ाया था वही कर लेंगे। गोस एलिमिनेशन कर लो, LU डिकम्पोजिशन कर लो, गोस सीरियल कर लो, बहुत सारे मेथड है वो कर लोगे अपना, ये U1 U2 UN मिल जाएंगे। सर आप तो कह रहे तो बड़ी समस्या है, ये सिंगुलर परटर्बेशन का तो बड़ा आसानी से निकल सोल्यूशन।
समस्या कहाँ आएगी? एक तो दो दो चीज थी ना, जब हम न्यूमेरिकल मेथड डेवलप कर रहे थे, क्या था? न्यूमेरिकल एनालिसिस इज कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट. नंबर वन, डेवलपमेंट ऑफ मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. सेकंड, एरर एनालिसिस. तो वो तो करा ही नहीं अभी, एरर एनालिसिस तो वो भी करके देखते हैं कहाँ दिक्कत आती है. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई है. चलो आगे, ये मतलब ए मैट्रिक्स है और यू अननोन है. ऑफ कोर्स इट्स अ ट्राई डायगोनल एंड हैज नाइस प्रॉपर्टी, मींस डायगोनली डोमिनेंस एंड दिस एंड दैट. तो आपको सॉल्यूशन मिल गया. चलो एरर पे आ जाते हैं. ये यू हो गया, ये एफ हो गया. ठीक है नहीं, ये सोल्व कर लेंगे ना, अपने घर जाके देख लेना एक बार. अब आते हैं कन्वर्जेंस एनालिसिस में. अब हम डिफाइन करेंगे भाई ह्यूमन एरर मींस ट्रंकेशन एरर. भाई वो नहीं तो दो चीज को ही तो एड्रेस कर रहा था हमें, और अगर बोर्ड यूज कर रहा है तो एक को ही करना है भाई. अगर जैसे ही मशीन यूज करूंगा तभी दूसरी करनी है. अगर मैं मशीन यूज नहीं कर रहा, मैं तो कंप्यूटर नहीं किया ना सर. वो पीपीटी बनाने में तो कंप्यूटर ही कर रहा था आपने यूज, और कंप्यूटेशन में तो नहीं कर रहा. और यहाँ आपने ये स्लाइड इस पर ही चला रखी है, बोर्ड तो नहीं कर रहे यूज आप. बट है भाई कंप्यूटेशन में जैसे ही आप यूज करोगे, तो कंप्यूटेशन में तो यूज नहीं कर रहा, तो ट्रंकेशन एरर को ही डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब ट्रंकेशन एरर कैसे डिफाइन करें? इन्हें सर वो तो ऐसे तो ट्रंकेशन एरर हमने कहीं नहीं देखी. वो सीरीज सी बन जाती है, उसे ट्रंकेट करते थे. बट यही ट्रंकेशन एरर है. क्या था अभी जो, जैसे ही ये वाला फॉर्मूला है ना हमारा, ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये तुम्हें ध्यान दोगे तो फिर अच्छी रिसर्च कर पाओगे. ये वाला, ठीक है नहीं. अब क्या है, ये इक्वलिटी हो गई. अब अगर मैं इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू को जो है एग्जैक्ट से रिप्लेस कर दूं, तो भी ये इक्वलिटी जो है क्या हो जाएगी? अनइक्वलिटी. एम आई राइट? जैसे ही मैं यूआई को रिप्लेस करूंगा यू एट एक्स आई से, तो ये जो इक्वल टू एफ था, एफ आई इक्वल टू एफ एक्स आई, ये तो है. इसे मत कह देना कि भाई एफ आई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स आई. ये तो इक्वल है, बट एक्स यू आई इज नॉट इक्वल टू यू एट एक्स आई. ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे एग्जैक्ट से रिप्लेस करूंगा अप्रोक्सीमेट को, तो ये इक्वलिटी जो है विल बिकम इनइक्वलिटी. अगर इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो नॉन जीरो हो जाएगा. जो नॉन जीरो क्वांटिटी होगी दैट इज नोन एज द ट्रंकेशन एरर. और ये अभी ये नोट कर लेना. आई एम क्लेमिंग हियर, सर साथ में है और हमारे तो गुरुजी हैं, कहीं गूगल बाबा पे नहीं मिलेगा ये. दिस इज सियर, I mean giving you, and still I did not I write any book or any such thing by my experience. But you will, if anybody have any doubts, so I would be happy to address that. So you see, as we that by the exact one, so whatever difference is there, so that is the truncation error. सो लेट्स सी. अब ट्रंकेशन एरर को करना, अब तो वही है भाई. ट्रंकेशन एरर कैसे निकालते हैं कि जो भी है ये डिफरेंस टर्म है उन्हें किससे कर देंगे? टेलर से. टेलर से जो है, टेलर भी बहुत बड़ा यूजफुल है टूल जो है, उसे टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर देंगे. फिर सिमिलर होनी चाहिए ना. ये माइनस ही तो, फिर दिक्कत क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है दिक्कत, ये माइनस. इन्हें दोनों को हमने एक्सपेंड कर दिया टेलर से. टेलर से एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई है करके देख लेना. ये पीपीटी यही है सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ये करने के बाद ये आ गई हमारी. ठीक है, अब ये आ गई, तो इसमें ट्रंकेशन एरर जो है, अब क्या हो गई? ट्रंकेशन एरर जो भी मतलब मैक्सिमम लीस्ट पावर ऑफ एच वाली टर्म होगी सीरीज में, इसे सिंप्लीफाई करोगे ना कैंसिल वेंसिल करके, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एप्सिलॉन एच स्क्वायर बाय 12 दिस डेरिवेटिव. And of course, we are assuming that you have nice regularity condition, that U is sufficiently smooth. I mean, belong to C4. Am I right? C4 means its fourth derivative is bounded. अगर ये ही अनबाउंडेड हो गया तो H को जीरो कर लो, तो ये तो जीरो होगी ही नहीं है. ठीक है, तो इट इज बेसिकली
it is the bounded quantity. So it is bounded. This is some number. As h tends to 0, so this t tends to 0. कब कहोगे मेथड कंसिस्टेंट है? When h tends to 0, t must tends to 0. जैसे h 0 को जाए तो तुम्हारी ट्रंकेशन एरर 0 हो जाए और ये y कैपिटल N जो था वो gx को कन्वर्ट कर जाए. ठीक है नहीं? थ्योरेटिकली यही होगा. तो ये तो सर हो रहा है. तो दिक्कत कहाँ से आ गई आपको? चलो देखते हैं. और ठीक है, ये तो बैठा है ना अभी एप्सिलॉन, यही दिक्कत करेगा. चलो ये स्टेबिलिटी कंडीशन है, उसकी कोई जरूरत है नहीं इतनी. इस पर आ जाते हैं वापस. ये आ गए हैं. ठीक है. ये जब इसके जो डेरिवेटिव निकालोगे ना, ऊपर एप्सिलॉन बैठा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो और जल्दी 0 को कन्वर्ट करेगा. जितना छोटा एप्सिलॉन होगा उतना ही पिछले वाले में अगर देखो. बट ये जो डेरिवेटिव है, इन जब डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे तो उन डेरिवेटिव में क्या आएगा? उन डेरिवेटिव में ये एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा. ये देख रहे हो ना? यही दिक्कत करेगा. अब h टेंस टू 0, उधर एप्सिलॉन टेंस टू, मैं वही बिहेवियर को एनालाइज करना चाह रहा हूं कि एप्सिलॉन टेंस टू 0, तो दोनों में तो हो गए. नीचे वाला भी 0 हो जा रहा है, ऊपर वाला भी. अब कौन है? तो अब क्या करें? बट एक मेरा फायदा, ऊपर 2 पावर है. पावर 2 है. पावर 2 है. तो मैंने क्या किया? मैंने h बाई एप्सिलॉन को अलग ले लिया, h ले लिया, तो ये हो गया. और मैंने कंडीशन लगा दी कि h पुट h बाई एप्सिलॉन लेस देन 1, तो क्या हो जाएगी? ये इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी बिकम t इज लेस देन ch. तो स्टिल ठीक है, मतलब ऑर्डर घट गया. ऑर्डर घट गया कोई बात नहीं, बट कन्वर्स तो कर रहा है. बट हमें ये देखना है अब ये जो कंडीशन है ये फिजिबल है कि नहीं है. भाई ये तो ठीक है, थ्योरेटिकली तो चल जाएगा, तो प्रैक्टिकल है कि नहीं? अच्छा ये क्या है सर बवाल प्रैक्टिकल वाला? ये देखिए, हमने ले लिया सपोज एप्सिलॉन जो है 10 रेज टू द पावर माइनस 10 है. तो 2 मिनट लूंगा सर. ये एप्सिलॉन रेज टू द पावर, सपोज करो एप्सिलॉन मैंने ले लिया 10 रेज टू द पावर माइनस 10, तो फिर मुझे h क्या लेना पड़ेगा? लेस देन एप्सिलॉन. तो मैंने h ले लिया 10 रेज टू द पावर माइनस. सर इसमें क्या दिक्कत है? वो ले लो, अपने हाथ है. 10 रेज टू माइनस 20 ले लो, सुपर कंप्यूटर भी है. तो अगर जैसे ही मैं लूंगा n कितना हो जाएगा मेरा? 10 रेज टू द पावर 11. दिस इज इन 1D. समझ रहे हो? यू आर सोल्विंग अ सिस्टम ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 रेज टू द पावर. अगर सेकंड पीटी में जाओगे, सेकंड डायमेंशन में, तो पता कितना ये एनॉर्मस सिंपल वो बन जाएगा. व्हेन यू गो इन 3D, even your supercomputer will fail, will not give you result in a moment. अब मैंने ये सर खाना छोड़ दूंगा पर गैस तो पास करनी पड़ेगी. अब जितनी बना के आओ इतना न, उनकी तो सर, उनकी तो खत्म हो जाए चल जाएगा, पर मुझे सफर करना है ना. बस स्पीड यही यही मैं कर रहा हूँ 2 मिनट में. तो ये हो गया 10 रेज टू द पावर. तो इट इज नॉट अ फिजिबल कंडीशन. तो ये जो है फिजिबल कंडीशन नहीं है. ये क्या है? अनरियलिस्टिक कंडीशन. ये कर ही नहीं पाओगे ये कंडीशन. तो व्हाट वी नीड टू इम्पोज, वी नीड टू इम्पोज और वी नीड टू डेवलप द मेथड which have parameter uniform convergence. ठीक है, तो यहीं छोड़ देते हैं. फिर सर कह रहे हैं क्वेश्चन ले लेते हैं. यहाँ तक आ गया हो तो ठीक है, एक दो, क्योंकि ऐसे मेथड में डेवलप करने हैं कि जिनकी कन्वर्ट, अभी क्या है कन्वर्जेंस किस पे डिपेंड कर रही थी? एप्सिलॉन पे. h एप्सिलॉन से छोटा, तो वो मेथड है, दैट मेथड नोन एज द पैरामीटर यूनिफॉर्म. अब मैंने सर टाइम ज्यादा नहीं लिया, ये टाइम आपने ज्यादा लिया है. जो मुझे 1 बजे आपने शुरू किया था, अब आपने जो है वो वाला टाइम जो है लगा करके बना
भाई वो तो मैंने बताया। भाई तुम बताओ कैसे इक्वल हो जाएगा ये। यहाँ देखो, तो चौहान सर कह रहे हैं कि यार तुम्हें बाद में इनसे झेलना पड़ेगा, मैं तो बता दूंगा। भाई आप बताओ कि ये इक्वल कैसे हो जाएगा। ये इक्वलिटी है नहीं, दिस इज मिस्टेकन, बिकॉज लिमिट, जैसे ही ये लिमिट हटा हटा दी ना, h टेंस टू 0, तो इसका मतलब ये अनइक्वल हो गया। ठीक है नहीं। अब जो अनइक्वल हो गया, वो इनइक्वलिटी को तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे ना। नहीं तो सोल्व नहीं कर पाओगे ना भाई, और तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन भी चाहिए, डिस्क्रीट का भी यूनिक चाहिए। नहीं आप बताओ क्या हो गए, अब ये भी नहीं पता है कि लेस देन है। यहाँ तो ये भी नहीं पता लेस देन है कि ग्रेटर देन है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। बस ये पता है कि यार अनइक्वल है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इक्वल मान लिया, एजेम्पशन लिया। जैसे ही एजेम्पशन लिया, इक्वल माना, तो वैसे ही ये यू एक्स आई, ये यू एक्स आई नहीं रहेगा, कुछ और होगा। जो कुछ और होगा उसे मैंने डिनोट कर दिया यू आई। तो ये जस्ट कीप इन माइंड कि यू आई इज नॉट, जहां भी देखोगे रिसर्च पेपर या उसमें, इज नॉट इक्वल टू यू एट एक्स। जैसे ही एजेम्पशन लिया ना भाई तुमने, जैसे ही कुछ अप्रोक्सीमेशन या एजेम्पशन लिया, इसका मतलब एग्जैक्ट से तुम दूर चले गए। Recording stopped.
पीपीटीज होंगी वो इसमें सेव होंगे आपके लैपटॉप में। ललित सर का है। ललित वरना इसमें कौन सी ईमेल आईडी चल रही है उस पे सेंड कर दो। रोम खोल न्यू टैब ओपन कर ले। न्यू टैब ओपन कर ले, जीमेल ओपन कर ले। जिससे पूछना होगा ना इससे चल करा देंगे। साइन अप क्यों करेंगे? साइन इन ही नहीं है इसमें कोई भी। चलो एक सेकंड मैं करता हूँ। रुक रुक मैं करता हूँ, इधर आना। ये सर का लैपटॉप है ना? ये लैपटॉप किसका है? जो वही लॉगिन कर रहे हो इसमें पीपीटी के लिए। अच्छा वो पीपीटी उसने इकट्ठी कर ली वैसे आस्था ने इस वाले सेशन में। वो इनके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा ना, मुझे शेयर कर दो। हाँ इन्होंने कर रखा अपना लॉगिन। हाँ हाँ अभी तो पहले इनको आना दोनों को। फिर भी रख ले एससी अग्रवाल से तो बिना उसके बोल लेंगे पीपीटी के। बस पीछे वो लगा देना उनके लोग पीपीटी बना रखी है। तो संदीप सर का है, वो पीपीटी उसमें देंगे पेन ड्राइव में, वो हाथ के आगे लगा देंगे। ठीक है, मैं ये रूम वो
पार्टिसिपेंट हैं वो उसमें क्या नाम है आपका? अब इसमें तो है हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ तो वो अभी कहीं हो गया है हाँ हाँ